Hello, good morning, everyone. Welcome to Career Launcher. And today we are going to talk about CAT 2025 6 hours marathon, and where we are going to discuss questions of Quant and DILR. And mainly, I think we are going to discuss the questions of PYQs that more or less you have already solved. But the thing is that we are also going to solve the questions. We are going to cover all the concepts that has been asked and every concept around those particular questions. Are you ready? And it's a long session. Good morning, Shubhang. So basically, I'm going to solve the questions as well as cover all the questions that cover all the concepts that are around those. So CAT day, we are going to have live analysis. We are going to have analysis in Hindi as well as in English. And we are also going to see score calculators, and more or less we are going to get all the answers for you in all three slots. Good morning, Rachit. And let's start with question number one. Now, this one, how you are going to solve this question and what's the approach. So, Ravi is investing 50% of his monthly saving in a fixed deposit, 30% of the rest in his saving of his saving is invested in stocks, and rest goes into Ravi's bank account. The total deposit by him is how much? That's what question is talking about. Okay. So what is the starting point that we need to start with? So if I am solving this question, what I am going to do, I am going to take Ravi's monthly saving as 100. How much he is going for FD? That is 50%. So that is going to be 50. Now what is remaining? Remaining is 50. 30% of 50 is going into saving. So 15 is going into stocks. Okay. So what is remaining? Remaining is going to be 35. That is saving. Okay. If the total amount deposited by him is this, that is saving and fixed deposit, that is 50 plus 35. So I got 85, and 85 is equivalent to what? That is going to be 59500. And now I need to find out what is 1. So 1 comes out to be, can I cancel it by 5? Yes, this is going to be 17. This is going to be 119. So that comes out to be 700. So what is going to be 100? That's going to be 70,000. So what is his total monthly saving? That comes out to be 70,000. And that's what we are trying to calculate. Understood? So in this question, I am not going to go by the variables. Just start with 100 and talk about ratio. So thank you, but I'm not sure others agree with you or not. But thank you. Okay, so basically, do not start these kind of questions with variables. Just start with the 100 itself. We generally do it with 100. Sometimes, if you get confused, go with 100x. So, but don't go with some random number. Okay, now this one. We are going to start with some easy questions, then perhaps move on to the difficult ones. And more or less, we are going to cover every variety of question. Okay, Rachit. Rachit, do you remember the answer?
Then more or less yes, but we are going to take different concepts as well. Okay. Um, Chaiti, I think at this point of time you need to write maximum of one mock. That should be either today or tomorrow, not any mock after that. Oh, Rajit. So there are going to be a lot of questions that you didn't solve yesterday. So profit made by C1, C2, and C3 are in the ratio of 9 is to 10 is to 8. Now I also got C4. I also got C5. Now question says that C2, C4, and C5. These are in the ratio of 18, 19, and 20. Now the thing is, the only value that's common between first ratio and second ratio is C2. So what I'm going to do, I'm going to make it same. So if I multiply the first value with 9, second value with 5, so I am going to get this value as 90, this value also as 90. So what I'm going to get, I am going to get this as 81. I'm going to get it as 90. I'm going to get it as 72. And this is going to be 76. And this is going to be what? 100. Now, what is the difference between C5 and C1? That's 19. That is equal to this value that is given to us, right? So if this is same, that it means what is the total profit? That should be this only. So add up all the numbers. So what I am going to get? I am going to get 81, so 100, 190. So 190 plus this is going to be 153. So I am going to get 343. Mm, mm. This okay. ये यार ये 95 होना चाहिए plus 95. So this comes out to be 438. So answer of this is going to be option A, that is 432. Sanmit, I have already told you that at this point of time, the maximum number of mocks that should be written by you are going to be two. Sorry, not two. I would say even one. After tomorrow, or maybe the day after tomorrow, no mock should be written. Okay. Now this one. Now in this, I'm going to discuss a lot of things that in what kind of graph, how you should calculate the areas. So all the variety of the graphs that can be asked in this, I will calculate the area. The area of the closed region bounded by the equation mod of x plus mod of y equal to 2 in the two-dimensional plane is what? Okay, Shubham. Okay, Sanmit. Akar, you can definitely say it's a formula-based question. But what it means in 2017, this question, look, I'm going to see that all kind of variety of in this particular question. Okay. So basically, the first of all, what I'm going to do, I'm trying to avoid all the confusions. So what I'm going to do, I'm just asking you to remember the graph. So if you get these kind of questions, the standard graph must be looking like this. This coordinate is going to be 2 comma 0. This coordinate is going to be 0 comma 2. This is the standard graph of mod of x plus mod of y equal to 2. Now, what is the area of this triangle? That is going to be half into 2 into 2. So that comes out to be 2.
And what is the total area? That comes out to be 2 plus 2 plus 2 plus 2. That's going to be 8. So answer comes out to be 8. Now, instead of that, if I ask another question, that is, what is the area of mod of x minus 3 plus mod of y plus 2 equal to 2? Now, what is the area? If I have another question, that is mod of x minus 3 plus mod of y plus 2. So, whenever something constant that is being added or subtracted, do one thing, just ignore these values. Answer will not change. Fine. Now, what if I say, what is the area of 2x minus 3 mod of 2x minus 3 plus mod of 3y plus 4 is equal to 12? Now, what is the area? I'm still not going to go by a formula. I'm still going to make a graph and get the answer. Because I myself forget the formula multiple times. So, so in this case, again, the constant that is being added or subtracted, rejected. That is called shifting of origin, and that doesn't change the formula. So what I am going to do, I am simply going to draw the graph. Now, I have drawn the graph. Now it is 12 comma 0. This is 0 comma 12, right? Now, but what do we have? Instead of we had x over here, but instead of x, what do I have? 2x, right? So this 12 is not the value of x. This 12 is the value of x. Sorry, this 12 is not the value of x. It is the value of 2x. So what is the value of x? That comes out to be 6. So this point comes out to be 6 comma 0. Now, this 12 is not the value of y. This 12 is the value of 3y. So what is the value of y? That's going to be 4. Now, what is the area of this triangle? That is going to be half into 4 into 6. That comes out to be 12. So if this area is 12, what is the total area? That comes out to be 48. Understood? So basically, whenever a constant is being added or subtracted, area doesn't change. But if something is being multiplied or divided, area will change. Understood? Now, the same logic can be applied in different type of question, that is mod of x plus y plus mod of x minus y equal to, let's say, a. So the general and standard graph of this one is going to be this. This is a graph, and remember the corner points are a by 2 comma a by 2. Fine. So if someone asks me that what is the area of 2x minus 3y plus 2x plus 3y equal to, let's say, 24. Now what is the area? So how I can calculate? So again, I am going to do the same thing. I am just going to make the standard graph. What is the standard graph? That is, just draw the square, and this is going to be 12 comma 12. Why? Because the corner point has to be a by 2, a by 2. So 24 by 2, 24 by 2. But instead of x, what do we have? 2x. So this 12 is the value of 2x. So what is the value of x? That is 6. Instead of y, what do we have? 3y. So, and this 12 is the value of 3y. So what is the value of y? That is going to be 4. So what is the area of this rectangle? That's going to be 6 into 4. That's going to be 24. So 24, 24, 24, and 24. What is the total area? I am going to get what? That is equal to 96. So my answer comes out to be 96. Akar, remember this? Do you remember all the formula? I don't. And during the exam, most of the time, people forget the formula.
Fine, I am not saying formula is wrong. I am saying I don't use it. Fine. Everyone is clear that how this is used. Now this one. Hmm. think I'm not well. हाँ, तो कैसे करेंगे इसको? ABC is a right triangle isosceles triangle with hypotenuse BC. Okay. So what is the approach in this? In geometry, the only approach is to draw the figure. If you can't draw the figure, you can't get the answer. Just give me a moment. Hmm. Okay, Shubhang. Okay. So basically, what is the first thing we can do? We have to draw the graph, draw the figure. In geometry, it's always true. You have to draw the graph, otherwise, it becomes a very difficult task to get the answer. So I got this triangle, and it is what? Isosceles triangle. Now this is B, this is C, and this is A. Now, first, what did I do? I considered BC as the diameter and drew a circle away from A. So that is this. Now AB has a length of 6. This is 6. This is 6. So this is going to be what? That is going to be 6 root 2. Okay. So this comes out to be what? So this is the, let's say this is the center. Now BPC is an arc centered at A. So I considered this as this center and drew a circle. Now the question is talking about
area enclosed by this. Okay. Now, what can I do? What should I do? So basically, what is the answer? That is going to be area of BQC minus area of what? Area of BPC. That's my answer. Okay. And I need to subtract this area. Now, there is no way to calculate this area directly. So, what is this area? So, this area is overall ABPC minus the area of triangle, right? So, what I am going to do, I am going to, instead of thinking much, I am going to write it as it is area of this minus area of BPC, and that's my desired area. Okay. So, what is this? This is going to be pi, and this radius comes out to be what? 3 root 2 into 3 root 2 whole square divide by 2, because we are talking about the area of semicircle. Now, minus BPC, BPC means this area. And this area, how can I figure out this area? So that is this total area. So that is going to be 1 by 4, because it's a quarter circle, into pi into 6 square. This total area is going to be this minus the area of triangle. So area of triangle is going to be what? That is going to be half into 6 into 6. 6 into 6. Okay. So this is going to be what? 18 pi by 2, that is going to be 9 pi, minus 9 pi plus 18. And these two values are going to get cancelled out. Answer directly comes out to be option B. So write it down. Whatever you need to calculate, first write it down and calculate everything individually. Eventually, you are going to get the answer. If you are going to think too much over it, you are going to spend a lot of time. So don't. Just draw the figure, write it down, you will get the answer. Devraj, are you talking about Jugaad or Devraj? I'm not sure you know this or not. I'm not very good with Jugaad. I'm just fast. This one. And one more thing I'm very good good with, that is पहाड़े. मुझे पहाड़े याद है. So half of the times when I calculate, I don't need that. What would I say? The calculator kind of thing. Now, how I'm going to solve this one? The metallic cube is melted to form 5 solid cubes whose volumes are 1, 1, 8, 27, 27. Now, what is the sum of surface area? So basically, we are going to use one basic logic of similarity in this, and more likely we are going to get the answer. Yes, Kalpvik. It is an right angle isosceles triangle. Na? So isosceles it is. So AB must be equal to AC. And it should be 45, 45, 90 triangle. Got it? That is written in the first line itself. A solid metallic cube is melted to form 5 solid cubes whose volumes are in the ratio. So 1, 1, 1, sorry, 8, 27, 27. So what is the total volume we are talking about? Total volume is going to be what?
64, right? So the volume of original cube was 64. So what is the ratio of sides? So ratio of sides is going to be 1, 1, 2, 3, 3, and 4. Okay. Now, when I talk about surface area is actually the square, right? So this is going to be 1, 1, 4, 9, 9, and that is 16. So 9, 9, 18, 18, 20, 24. So this is 24, and this is 16. So what is the change in surface area we got? That's going to be 50%. Understood? So basically, I am simply writing down everything. I'm not going to think much because this is the ratio of volume. So I am assuming volumes are 118, 27, 27 only. So total volume becomes 64. So if fine, and ratio of side is 1, 1, 2, 3, 3. Just cube root of all the values. Now areas are going to be in terms of square. Now you are going to think that surface area should be 6a square, and you need to calculate according to 6a square. But 6 is multiplied, being multiplied everywhere. So why not reject 6 itself? Got it. Now if you are going to use the formula that 6a square, then you are going to calculate every individual area. No, don't. That is going to waste time. Got it? Now this one. Now how would you solve this question quickly? And how do I solve a quadratic equation? So, first of all, what is given to us? The value that is given to us is x square, that is equal to x plus 1. Okay, I am just making it a square. So, what I am going to get? I am going to get uh, x power 4 is equal to x square plus 2x plus 1. Fine. Now x square is what? X plus 1. So I must be getting value as 3x plus 2. Understood? Now what is the value of 2x power 4? That I can say that is going to be 6x plus 4. Now anyone has any doubt till this point? Yes, no. Now what I am going to do now, I need to find out the answer that is equal to, because try to understand this value is x square and question is talking about x power 4. So don't you think, RJ, if I make it a square, I'm going to get the answer? Directly, I'm going to reach that value. Got it? Okay. So now
my job is to solve this equation. Right now, what you are going to do, you are going to use that formula, that is x is equal to minus b or something like this, right? Are you using that formula? Yes, no? Now, the thing is, I'm not going to do that because I think that is going to be very lengthy. So, what I am going to do, I am simply going to pick x equal to 1. So, if I put x equal to 1, this is going to be 1, this is going to be 2. If I put x equal to 2, this is going to be 4, this is going to be 3. Right? So, value of x should be lying between 1 and 2. If I put x equal to 1.5, so I am going to get what? 1.5 square is 2.25 and this is going to be 2.5. So basically my answer, my value of x should be close to 1.6. So if you put 1.6 square, that is going to be 2.56 and this is going to be 1.6. Sorry, 2.6. So value of x comes out to be 2.1, 1.6. So 9.6 plus 4. So my value should be close to 13.6. Okay, which option is giving me value that is close to 13.6? Only this option, that is what is square root of 5? That is going to be 2.2 around, right? So 2.2 into this is going to be 6.6 plus 7. Okay. Now, if I am going to do this, that is going to be 11 plus 3, that's going to be 14, that's going to be higher. Similarly, this is going to be greater than 14 itself. So this is rejected. This is also rejected. The only possible answer I can have is option D. Clear? So I didn't approximate much. So whenever I am solving a question of a quadratic equation, I can approximate. Make sense? I go with decimals as well. The problem is people think all the values should be integer all the times. No, it's not. Okay. Now let's see this question. So basically we have seen a lot of questions of this type. What is the minimum value? What is the maximum value? So in this, just tell me what is the approach you are going to take. Look, first of all, uh, first of all, try to understand this point, that are you comfortable with the basic concept? The basic concept is important. Can a perfect square be negative? Can a perfect square be negative? Yes, no. All three numbers that are given here, you are adding these numbers and all three numbers are perfect squares. So perfect squares can never be negative, right? So it means this is a positive number, this is a positive number, this is a positive number, right? Now I need to minimize the value of a minus b, a minus c, a minus d, then only I am going to get the minimum value. Now, if I want to minimize this, it means A should be very close to B, A should be very close to C, A should be very close to D. Now, I would prefer to keep all values are equal. So, every number should be 7.5, 7.5. But the problem here is, it says it is an integer, so I can't put 7.5 all numbers. So, if I am going to break it, I am going to break it like 8877. Instead of that, if it would have been 29, then I would have broken it as 8777. Got it? Now, so basically, what I'm going to do, 8 minus 8 is 0, 8 minus 7 is 1,
8 minus 7 is 1, and that's equal to 2. Understood? So this is how we are going to solve. This is how we can minimize. And whenever a question asks what is the minimum value, I put all the values equal and get the answer. Understood? Anyone has any doubt? Rachit, are these talking about? Okay, so the question is not talking about positive integers, right, Rachit? So maximum value is going to be infinite. You give value of a to infinite and b, c, d as minus infinite. So overall value is going to be tending to infinite. Got it, Rachit? इसका अप्रोच क्या है? First term is 3, common difference is 4. Okay, अब कैसे करेंगे? What is the formula? What is the summation formula? That is n minus 1, sorry, n by 2, 2a, that is 6, plus n minus 1, that is 3n minus 1, into d, that is 4. And that is equal to 16, 1830, that is given to us. ठीक है, ये तो कट गया. ये कितना आया? 610. ओके, सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना क्या आएगा? 12n प्लस 2 इंटू n, एंड दैट इज इक्वल टू कितना? 1220. दो कॉमन ले लिया, 6n प्लस 1 टाइम्स n, एंड दैट इज इक्वल टू 1220. अब ये काट के अपना वापस से 610 आ गया. ठीक है, तो अपना 6n प्लस 1 इंटू n, दैट इज इक्वल टू 610. मैं n को सीधे सीधे 10 ना डाल दूं. सो n इक्वल टू 10, सो दिस बिकम 61. ठीक है ना? So I'm directly going to get the value of n. So what is the summation of this? So that is going to be n by 2, that is going to be 5, 2a, that is 6, plus n minus 1, that is 9, into 4. क्या आएगी ये value? That is going to be 36, plus 6 is going to be 42, 42 into 5 is going to be 210. M into 210 is greater than 1830.
तो 30 से काट सकते हैं तो आएगा 7, 30 से काटेंगे तो 0 और 61। So m should be greater than 61 upon 7. So smallest value should be 9. Understood? तो इसमें क्वेश्चन में ज्यादा सोचना नहीं था। उठाओ जो लिखा हुआ है, लिखना शुरू करो इक्वेशन के फॉर्म में। यू विल गेट द आंसर इन 2 मिनट्स। ठीक है, उसमें सीधे सीधे एक इक्वेशन गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है और समेशन गिवन है, उससे एन की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। आकर देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगा, वो हमेशा होता है। ठीक है, वो एक आध क्वेश्चन के लिए एरर होगा, उसके लिए देखो, अगर लेट मी टेल यू वन थिंग, none of us have ever talked about 100% accuracy because all of us know कि एक आध क्वेश्चन में सिली एरर करना मतलब तुमने जैसे सॉल्व कर लिया, तुम्हारा आंसर तुमने गलत मार्क कर दिया, या तुमने एक हल्की सी कैलकुलेशन एरर कर दी। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे 61/7 है, कोई इसको 8 8 लिख दे, इतना करने के बाद हो सकता है कोई 8 मार्क कर दे, हो सकता है कोई 10 मार्क कर दे। तो ये एक आध क्वेश्चन में एरर्स तो हमेशा ही होगी। ठीक है, और सॉल्यूशन मैकेनिकल में है, देयर आर गोइंग टू बी फ्यू क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी मैकेनिकल। ठीक है ना? सो जस्ट write the equation, get the answer quickly, and that's it. That's the standard approach. Now this one. ख्याति देखो, एक वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, एक वैल्यू नेगेटिव में भी आएगी। Product of two numbers is positive, it means either both the numbers are positive or both the numbers are negative. ठीक है ना? और वो 6n+1 × n था, वो चमक रहा था, आंखों के सामने चमक रहा था, एंड राइट हैंड साइड वाज 610। तो दिख रहा था कि मैं n को 10 डालूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड ख्याति? Kathy, if I am talking about this particular question, if you see this, that is 6n+1 multiplied by n, and that is equal to 610.
तो अगर n को तुम 10 डाल दो, सो दिस इज एक्चुअली 61 इंटू 10। n को अगर तुम 10 डाल दो तो ये क्लियरली क्लियरली दिख रहा है कि ये 61 ही बनेगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है, आई एम नॉट ट्राइंग टू फाइंड इट आउट, ये दिख रहा है कि n को 10 डालो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। गॉट इट? ओके शुभांग, कैसे किया? अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन। नाउ कैसे करेंगे इसको? आंसर तो आ रहा है, रचित गॉट 65, शुभांग आल्सो गॉट 65, बट इफ यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम, व्हाट इज द अप्रोच आई एम गोइंग टू? ओके, ठीक है, सो आई टेल यू व्हाट अप्रोच आई एम गोइंग टू टेक। ठीक है, सो देखो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अरुण जा रहा है अपने घर से उसके अपने हॉस्टल जा रहा है। सो अरुण इज गोइंग फ्रॉम हिज होम टू हिज हॉस्टल। ठीक, 60 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, जब वो वापस आ रहा है सेम रूट से, ही इज कमिंग बैक विद स्पीड ऑफ 25। ठीक है, उसके बाद उसने बाईपास रोड लिया, सो डिस्टेंस 5 माइल से बढ़ गई। ठीक, सो अगर जाते टाइम उसकी डिस्टेंस डी थी, सो आते टाइम उसकी डिस्टेंस क्या होगी? d+5। So what is the total distance he is going to cover? That is going to be 2d+5. हाँ या ना? Yes, no. That is the first thing I am going to think of. And that is going to be 55. That is my first option. So D की वैल्यू आ गई 25। मैं पहला ऑप्शन उठाया। अगर मैं इसको 60 ले लूं तो D की वैल्यू आ गई 27.5। दैट इज हाईली अनलाइकली। अगर मैं इसको 65 ले लूं तो D की वैल्यू आ गई 30। दैट इज मोस्ट लाइकली, क्योंकि 25 और 30 में तो आई विल प्रेफर 30 ओनली। और 70 अगर ले लूं तो 32.5। दैट इज अगेन वेरी हाईली अनलाइकली। सो मैं पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 30 लेके। अंडरस्टूड? लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको मार दूंगा 30 पे, आंसर मार दूंगा ये, नहीं नहीं नहीं, आई एम स्टिल गोइंग टू सॉल्व इट। तो जब वो जा रहा है तो वो 30 किलोमीटर कवर कर रहा है विद स्पीड ऑफ 60, तो उसको जाते टाइम उसको टाइम लग रहा है 30 मिनट्स। ठीक है, अब जो वापस आ रहा है, ही ड्रोव हाफ वे अलोंग द सेम रूट। सो हाफ वे का मतलब 15 किलोमीटर चला। किस स्पीड से चला? 25 से। सो कितना टाइम लगेगा? 15/25, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? दैट इज गोइंग टू बी 0.6 आवर्स। ठीक है, उसके बाद वो कितना और चल रहा है? वो चल रहा है 20 किलोमीटर। किस स्पीड से चल रहा है? 40 से, सॉरी 50 से। सो कितना टाइम ले रहा है? 0.4 आवर्स। सो रिटर्न जर्नी में टोटल टाइम टेकन कितना हुआ? 1 आवर। फॉरवर्ड जर्नी में टोटल टाइम कितना हुआ? 30 मिनट्स, हाफ एन आवर। सो रिटर्न जर्नी का टाइम और फॉरवर्ड जर्नी के टाइम में क्या 30 मिनट्स का डिफरेंस है? हाँ। सो एम आई गेटिंग माई आंसर? यस, दैट्स ऑप्शन सी। अंडरस्टूड? एक बार पढ़ तो लो। देखो मैं तुम्हें बता दूं मेरी जनरल टेंडेंसी क्या है। ठीक है, मेरी जनरल टेंडेंसी है किसी भी क्वेश्चन में ये वाली, जो भी चीज मुझे निकालनी होती है मैं हमेशा वो स्टार्टिंग में लिखता हूं कि पहले मुझे निकालना क्या है। ठीक है, उससे मुझे चीजें फ्रेम करने में आसानी होती है। इसमें तो सीधे एरिया बन रहा है। ठीक है, इसमें सीधे सीधे वही है कि रेशियो ही करना है। लेकिन जो चीज निकालनी है उसमें आपको स्टार्टिंग में अगर आप लिख लोगे वो चीज को, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अंडरस्टूड? डिड यू गॉट द अप्रोच? दिस वन।
Hmm. The average height of 22 toddlers increases by 2 inches when two of them leave this group. If the average height of these two toddlers is one third of the average height of 22, ठीक है. So basically मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, कोई जादू नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, सिंपल इक्वेशन. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एवरेज हाइट ऑफ दिस 22 टॉडलर्स इज ए. ठीक है. सो 22 टॉडलर की टोटल हाइट क्या होगी? 22 है. अब 22 लोगों में से दो लोग चले गए तो बचे कितने? 20. अब इन 20 लोगों की एवरेज हाइट 2 से बढ़ गई, सो एवरेज हाइट हो गई a+2. और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 टॉडलर्स की एवरेज हाइट निकालनी है, इसका मतलब माई आंसर इज a+2. सो मुझे a+2 की वैल्यू निकालनी है. The average height of these two toddlers is one third of the average height of the original 22. So इन दो toddlers की जो height है that is a/2, a/3. ठीक है. So total height of 22 toddlers is 22a. Total height of these two toddlers is 2a/3. Total height of 20 toddlers is 20 times a+2. So 22a is equal to 2/3a plus 20a plus 40. अब ये तो कट गया, ये बचा 2a माइनस दिस इज गोइंग टू बी 4/3a एंड दैट कम्स आउट टू बी 40. So this comes out to be 10. So a comes out to be 30. So मेरा आंसर होगा 32. So answer of this question is going to be 32. And I'm sure few people have got 30 because they calculated the value of a. देखो यहाँ पे तुम्हें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जब तक तुम स्टार्टिंग में ये नहीं लिख रहे हो कि तुम्हें निकालना क्या है, मोर लाइकली यू आर गोइंग टू गेट इट रॉन्ग. क्योंकि यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट एंड यू जस्ट डिडंट सी के आंसर ए नहीं है, आंसर a+3 है, a+2 है. अंडरस्टूड. और एग्जाम के बाद ना तुम्हें वो क्वेश्चन कभी भी हर्ट नहीं करेगा जो तुमको नहीं आता था. एग्जाम के बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन तुम्हें हर्ट करेगा वो है जो तुम्हें आता था, तुमने सही सॉल्व किया लेकिन आंसर गलत मार्क कर दिया. ठीक है. मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं. In 2017, I got this answer wrong. I did everything right in this question और मैंने 2 को 4 लिख दिया. ठीक है. एंड ये चीज मुझे आज भी याद. So after the exam, I came out of my exam center and I was talking to one of the students and I was discussing this question with him. So I told him कि इसका आंसर तो 4 है. So मैंने बोला ट्रायंगल का एरिया अपना 2 आया है. So he told me सर 2 into 4 8 होता है, 4 नहीं होता है. Then I realized oh shit यार. सब सही करने के बाद मुझे 2017 से 2026 आ गया है, 25 खत्म होने वाला है, मुझे अभी तक ये गलती याद. ठीक है. सो ये चीज ध्यान रखना है कि हमको ये अप्रोच लेके चलिए. दिस वन. बेटा पहले ये कर लो. ठीक है. we'll discuss and I'll talk to them. More likely we'll do. अचीवर्स का वीडियो सोल्यूशन नहीं है क्या? देख लेते हैं, होगा.
A motorbike leaves point A at 1 p.m. and moves towards B at a uniform speed. A car leaves point B at uh, a car leaves point B at 2 p.m. and move towards A. ठीक है, ठीक है, they meet at 3:40 from A और B के बीच का डिस्टेंस क्या है? ठीक है, ओके, क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 1 बजे निकला ये कितने बजे निकला? 2 बजे। Now they are meeting at what point? They are meeting at 3:40. So this is at 3:40 and this distance is 168. If this guy's speed is s, this guy's speed is what? 2s. Now this guy is traveling for how long? 2 hours and 40 minutes. So 2 hour 40 minutes, I can say that is going to be 2 by 3 hours, or I would say 8 by 3 hours. So what is the speed of this guy? What is the speed of this guy? That is going to be 168 डिवाइड बाई 8 अपॉन 3. तो ये कितना हो गया? 21, 63. ठीक है. So speed of this guy comes out to be 63. Then speed of this guy becomes 126. And this guy has been traveling for 1 hour 40 minutes. So 1 hour 40 minutes is going to be 5 by 3 hours into 126. So this comes out to be what? 42. So this distance comes out to be 210. So total distance comes out to be 378. I didn't use relative speed. Direct. This is a direct question जहां कुछ यूज नहीं करना है. ये 1 बजे निकला, 2:40 पे मिला, सॉरी 3:40 पे मिला, डिस्टेंस 168 है. तो उसकी स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड आ गई. इस वाले की स्पीड इस वाले की स्पीड की डबल है. तो ये अब ना कितना गिवन है? 63. तो ये 126 हो गया. ये यहां से यहां 1 आवर 40 मिनट्स में चल रहा है, तो स्पीड इसकी पता है. 1 आवर 40 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी आ गया. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दो, आंसर आ गया. अंडरस्टूड? ज्यादा कुछ करने वाला क्वेश्चन है नहीं है. क्लियर? दिस वन. बेटा नॉट दिस टाइप, दीज आर क्वेश्चंस ऑफ दैट. ABCD is a quadrilateral inscribed in a circle with center O. ठीक है.
देख लेते हैं. दिस इज अ सर्कल. ठीक है. ABCD ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. ये सेंटर है. दिस एंगल इज गिवन टू अस एज 120. ठीक है. BAC सेंटर से होके पास तो नहीं करना चाहिए इसको. ये 30 है. ठीक है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? BCD. ठीक है. देखो, CD एक कॉर्ड है. CD एक कॉर्ड है. ये सेंटर पे 120 बना रही है. तो ये सरकमफेरेंस पे कितना ड्रॉ करेगी? उसका आधा. सो दैट इज गोइंग टू बी 60 degrees. So basically, if a chord makes theta degrees on the circumference, then on center it makes 2 theta degrees. So CD is making 120 on the center. So on the circumference, it must be making 60 degrees. So this total angle is going to be 90. Fine. Now it is because all the vertices are on the circumference. So basically this total angle is 90. So what is the opposite angle? That's also going to be 90 because in cyclic quadrilateral, in cyclic quadrilateral, sum of opposite angles is always 180. Sum of opposite angles is 180. So if this angle comes out to be 90, opposite angle is also going to be 90. So answer of this question is directly going to be 90. Understood? Not much calculation, just basic knowledge and one question of geometry is done. This one. And these kind of questions, if I talk about this particular question, minimum possible value of sum of the squares of the roots of the equation. So basically these kind of questions are very common. Directly or indirectly, you are going to see a lot of these kind of questions. So I won't think a lot. I'm just going to take the standard process. So whenever you see these kind of equations, what is the first thing you are going to write down? Okay, Akar. So let's go step by step. What is the first thing you are going to write down? Okay, Rachel. Okay, Girish. I am going to write down what I need to find out. I want to minimize this value. Fine. Sum of square of roots means alpha square plus beta square. I want to minimize this. Now, what is this? This is actually equal to alpha plus beta whole square. So as soon as you write this, half of the things are going to be very clear to you. That is this. Right? So always figure out what you need to calculate. Now, alpha plus beta whole square. So alpha plus beta is what? Minus b upon a. So that is going to be a plus 3 whole square, right? Negative sign won't play any role over here because it is going to be positive eventually.
minus 2 alpha beta. So that is going to be minus a plus 5. Okay, so I am going to get what? A square plus 6a plus 9 plus 2a plus 10. So what is the value I am going to get? I am going to get a square plus 8a plus 90. Right. Now, if you know how to make a perfect square, it's fine. Otherwise, when you get a quadratic equation, you always get minimum value at minus b upon 2a. So what is the value of minus b upon 2a? That is going to be minus times 8 upon 2 into 1. That is going to be minus 4. So plug in minus 4 over here. So that is going to be 16 minus 32 plus 19, and value comes out to be 3. So that is one of the ways of doing it. Second way is you can just make it a perfect square and you can write it as a plus 4 whole square plus 3. This can be 0. So this is the answer. So either of the two ways are fine. So if you are not very comfortable at making it a perfect square, always remember in any quadratic equation, so standard quadratic equation, I'll write it down. That is ax square plus bx plus c, that is fx. If you get this function, if a is positive, you will get minimum fx at x equal to minus b upon 2a. And if a is negative, you will get maximum fx at x equal to minus b upon 2. Understood? Anyone has any doubt in this? So this is a very generalized rule that you can use anywhere in any quadratic function, and always start what you want to calculate. Understood? The last line of a solution always helps. It will help you build the first line. Okay, now this one. So this is a very good question. I would tell you what kind of approach you should take in these kind of questions. Instead of going by a shortcut, shortcuts sometimes are confusing. If you remember the formula, I know the formula, but I will still not go by the formula. Okay. Okay. Okay, Shubham. Okay, Rachit. Okay, Shubham. So basically,
how I am going to solve it. What is the standard approach? So always the same thing we are going to do, that is going to be a plus b upon ab, and that's equal to 1 upon 9. So what I'm going to say, I'm going to say ab is equal to 9a plus 9. This is what we have, right? So now remember this. Whenever you have an equation that has term of x into y, you have a term of x, you have a term of y. So whenever you have these things, whether there are some coefficients or there are no coefficients, fine. For example, if I say xy is equal to x plus y plus 3, right? Something like this. So you have a term of x into y, you have a term of x, you have a term of y, or you can say that is 4y. Okay. So whenever you have this, this, and this, always do one thing. Keep all the variables on one side. AB minus 9A minus 9B. That is as it is. Don't think anything. Just take it as it is. Now take A common, write it B minus 9. Take 9 common, write B minus 9. Okay. Minus 9 into minus 9, 81 is actually not there. So what you are going to do, you are going to add 81 here, you are going to add 81 over here. Okay. And that is equal to 81. Now I am going to say a minus 9 into b minus 9, and that's equal to 81. Fine. Now these kind of questions are always asked in integers. These type of questions are always asked in integers because if these numbers are not integers, there are always going to be infinite solutions. So you can take zero point 0.1 and 810. So those kind of solutions are also possible. Now this says that A and B both are positive, right? So negative, these can't be negative. So, and A should be smaller than B. So A minus 9 should be smaller than B minus 9, right? So I got one pair, that is 1 into 81. I got another pair, that is 3 into 27. I got third pair, that is 9 into 9. There are three possible pairs, and so answer of this question is going to be 3. Now you can say, why not 27 into 3? In that case, A will be greater than B. Understood? So how many solutions you are going to get? You are going to get 3 solutions. Clear? This one. Everyone understood what was the approach? And that's a standard type of question. These kind of questions, I think they were asked in couple of times. I don't know, but my gut feel says we might have this kind of question this year as well. This one, infinite GP. Hmm. Okay.
Okay. Okay. So what is the approach we are going to follow? I have a GP. GP is A, AR, AR square, and so on. Fine. The question is talking about what is the value of A5. So I'm directly going to write A5 is AR power 4. This is what I need to find out. Now there are two conditions that is given. That is an. I'm going to put n equal to 1. So a1 is equal to 3 times an plus 1. That is going to be a2. So that is ar plus ar square plus ar cube and so on. This is what that is given to us. That is the first equation. So a1 is a 3 times. This is infinite GP. What is the summation of infinite GP? That is first term upon 1 minus r, right? So this is this we got. So I can say that 1 minus r is equal to 3r. So 4r is equal to what? 1. So r comes out to be 1 by 4. Okay. This is what we got. Okay. Now what is the summation of infinite GP? This one. So that is going to be first term upon 1 minus r. And that is given to us as what? 32. Okay. So a is equal to 32 into 1 minus r, that is equal to 3 by 4 r, 24. Now I can simply calculate what is a, that's 24. What is r power 4 is going to be 1 by 4 into 1 by 4 into 1 by 4 into 1 by 4. So 4, this is going to be 6, this is going to be 3, this is going to be 2. So answer comes out to be 3 upon 32. That's going to be option C. Now I would say, if I have to guess in this particular question, if I don't understand this question, then should you take a risk in this question? I simply use the summation of infinite GP. So summation of infinite GP, anyone who doesn't know, that is a plus ar square and so on, is given by a upon 1 minus r. The condition is number of terms should be tending to infinity and common ratio should be less than 1. So my question is, in this question, should you take a risk? If you're unable to understand what is the solution, would you mark it? Yes, no. If I get this point, that is a5 is equal to a r power 4, and I get a1, matlab a is equal to 3 times ar plus ar square plus ar power 4, more likely I'm going to take a wild guess and mark this answer, because a r power 4 should be a multiple of 3. So there is only one option. So more likely I'm going to take a wild guess, mark this answer and leave. I'll take a risk of -1 in this particular question. I generally don't, but in this, if I don't understand the solution, more likely I will. And that's a very much educated guess. Understood? If you know how to solve, then I would say don't take a risk, solve. If you are confused with the solution, then I would say in this particular type of question, you can take it, because there is no other option number that is multiple of 3. Clear?
So how we are going to solve this one? Okay. 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 सो बेसिकली क्या कर रहे हैं? 35 kg शुगर है, ठीक है, और द कॉस्ट इज लेट्स से 100 एंड ही इज सेलिंग एट व्हाट? ही इज सेलिंग एट 120. अब वो 5 kg बेच रहा है. सो 5 kg कितने पे बेच रहा है वो? 5 kg सेम प्राइस पे बेच रहा है, मतलब 5 kg पे वो 20 रुपए कमा रहा है. ठीक, सो टोटल प्रॉफिट उसका 10. नेक्स्ट 15 kg वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, सो एट 120 10% डिस्काउंट इज 12 रुपीज. सो ही इज सेलिंग एट 108, तो वो 8 रुपए कमा रहे हैं, मतलब टोटल 120 रुपए. ठीक, 3 kg शुगर वेस्ट हो गई. सो 3 kg पे उसका 100 रुपीज का लॉस हो रहा है, मतलब उसका कितना हो रहा है? -300 हो गया. ठीक, अब सीन क्या है उसको? 15 5 20 23, बचा 12 kg. अब उसको ओवरऑल 15% प्रॉफिट चाहिए. ठीक है, मतलब 35 इंटू 15. 35 इंटू 15 कितना आएगा? दैट इज गोइंग टू बी 625, 525 रुपए का प्रॉफिट चाहिए. ठीक है, हाउ मच प्रॉफिट डज ही नीड? 525 फ्रॉम एंड ओवरऑल. सो right now he is standing at what value? Right now he is standing at minus 80 rupees loss. 80, he is standing at 80 rupees loss. So to get overall 525 rupee profit, he needs to get 605 in total. मतलब per kg he needs 50 rupees. It means he needs to sell 150 rupees per kg. Right now he is selling at 120. तो उसको 30 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा. सो व्हाट परसेंट ही नीड्स टू इंक्रीज? ही नीड्स टू इंक्रीज बाय 25%. दैट्स ऑप्शन बी. अंडरस्टूड? So 35 kg, I have divided 35 kg into multiple parts. One is 5 kg, second is 15 kg, third is 3 kg, next one is 12 kg. 5 kg पे वो पूरा 20 रुपए प्रॉफिट ले रहा है, तो 100 रुपए का प्रॉफिट. 15 रुपए पे 10% डिस्काउंट के बाद 8 रुपए का प्रॉफिट. 3 kg उसका पूरा डूब गया, तो पूरा लॉस. तो उसको ओवरऑल 525 रुपए का प्रॉफिट चाहिए. तो इसका मतलब लास्ट वाले में कितना प्रॉफिट होना चाहिए? दैट शुड बी 605. कितने केजी से? 12 kg से. मतलब 50 रुपए का प्रॉफिट पर केजी चाहिए. 50 रुपए के प्रॉफिट का मतलब होगा 150 पे बेचना है, 120 ऑलरेडी मार्क्ड है, सो 25% प्राइस बढ़ाना. अंडरस्टूड? हाँ या ना?
Yes, no, मतलब I don't generally go by equation in this. I go by individual profit and individual loss. समझ आया? This one. AG, why we are talking about why I whatever value I am getting that is approximated. I'll tell you why. 605 divided by this, so your profit is going to be 50.4 around, right? 50.4 means 150.4 around, right? So it is going to be 25.1, 25.2% or not, right? And that is closest to which option? That is 25. Question is talking about approximate. इसीलिए वो 605 को आई हैव टेकन एज 600 अप्रोक्सीमेट करने के लिए. गॉट इट? द क्वेश्चन itself is talking about nearest. Okay, Shubhang. Okay, Rachit. Okay, Ajay. Okay, Rachit. So पहला क्वेश्चन ये है कि स्टार्ट पॉइंट क्या है. स्टार्ट पॉइंट क्या है? ओके अर्पित. व्हाट टू फाइंड तो सीधे दिया हुआ एक्स चाहिए. ठीक है, इसमें तो एक्स चाहिए. अब उसके बाद क्या करेंगे? ठीक, नोट व्हाट टू फाइंड, दैट्स अ वेरी गुड थिंग रचित. एक्स चाहिए. अब एक्स के बाद क्या? अब देखो इस क्वेश्चन में 2 की पावर पे है एक्स, इसका मतलब अपने पास सीधे एक ही ऑप्शन है कि लॉग ले लो. नाउ इन लॉग डोंट डिफाइन द बेस इनिशियली. डोंट डिफाइन द बेस इनिशियली. वील टेक बेस लेटर ऑन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि लॉग हम ले सकते हैं तो लॉग हम किसी भी बेस पे ले सकते हैं एक्सेप्ट वन एंड ऑल, वो बेसिक कंडीशंस के हिसाब से. सो दिस बिकम्स log x log this log 2 log 5 2. यहां पे ये ना गिवन ही है, दैट इज log 3. अगर मैं बेस 5 पे ले लूं तो मुझे बेनिफिट क्या होगा? तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी और अपना सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, दैट इज लॉग बेस 5 3. दैट इज द आंसर आई एम गेटिंग. ठीक, मतलब बेस अपन बाद में डिफाइन करेंगे. इन द स्टार्ट वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी बेस, वी आर गोइंग टू टेक अ बेस सो दैट वी कैन कैंसिल समथिंग आउट. Otherwise, in the start, you say that you are going to take log in base 10, base 5, base 8. No, no, that won't make it. That won't be a wise choice. ठीक है. अब लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. ये ऑप्शन तो नहीं है, ये ऑप्शन तो नहीं है. ठीक. तो अब बेस 5 पे ये वाली वैल्यू है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. 1 प्लस दिस कैन बी रिटन एज दिस minus log base 5 5. This value is 1, so ये कट गया. आंसर बचा ये, so answer is going to be option D. अब ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि ऑप्शन मैच कराना है. यू गॉट द आंसर बट नाउ योर जॉब इज टू गेट द करेक्ट ऑप्शन. आकर
And Akar, I think that's what we have done. Is it or is it not? Have we done something else? दोनों साइड लॉग लेके बेस बाद में डिफाइन करना, नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। इनिशियली हम बेस को डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, पावर एंड बेस कैन इंटरचेंज, पावर एंड बेस कैन इंटरचेंज, यस। हाँ, लिख सकते हैं। Oh, you are talking about that property. Yes, yes, yes. 3 power log base 5 is also equal to 2 power log base 5 3। हाँ, लिख सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, हाँ, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ये वाली भी प्रॉपर्टी है। नाउ दिस इज इक्वल टू दिस। ट्रू। So that's directly you can get it. Yes, that's very nice. Very nice. So that is also a property. I forgot, log CB, and that is also equal to B log CA. Now, this is important property of log. This can be used in a lot of questions. And thank you, Akar. It just slipped out of my mind, so I just taken the base, taken the log, and got the answer. But anyhow, I think this is a faster one. Now, the next one. Thank you, Shubhang. Now, this one. Hmm. So, कैसे करेंगे इसको? Rachit, let me tell you why you are getting this. You are saying you are taking none as zero, right, Rachit? And in the question, it is never mentioned that none is zero. It may be zero, may not be zero. So none is zero is an extreme scenario. Arpit, whenever any question says which of the following is the value, fine, or which of the following can be the possible values, it means there is no definite answer, there is a range. So it means in this particular question, there is no definite answer, there is a range. And in from that range, they have given one option, one value. ठीक है, सो विदाउट ऑप्शन तुम कभी सॉल्व नहीं कर सकते। उसमें ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज दैट कैन टेक, दैट्स फाइन, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली बी, मतलब मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है लेकिन ऑप्शंस में एक ही है। गॉट इट? ओके, सो बेसिकली व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग, देयर आर 200 स्टूडेंट्स है, ठीक है,
So I am going to take the first case. That is burger वाले बच्चे. So burger वाले 134. ठीक है. सेकेंड पिज्जा वाले बच्चे. पिज्जा वाले बच्चे 105 है. ओनली बर्गर वाले कितने बचे? That is 134 minus 105. That's going to be 29. So only burger जो है वो 29 के बराबर या 29 से बड़ा तो हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता. ठीक, दैट इज माय फर्स्ट केस. ठीक है. अब जो दूसरी वैल्यू ये है कि 29 से बड़ा है तो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से छोटा होगा. राइट. अगर 96 से छोटा है तो 93 भी होगा. जो हो नहीं सकता है इसका मतलब 96 नहीं हो सकता है, इसका मतलब 93 होगा. ठीक. अगर मैं एग्जाम में करूंगा तो इतना निकालने के बाद सीधे 93 मार्क कर दूंगा. बट हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व व्हाई 93. ठीक है. नाउ सेकंड केस आई एम टेकिंग, that is in this case what is the value of none? That's going to be 66. That is outside the circle. Now in the second case I am taking none is 0. So none is 0. Burger is 134. Pizza is 105. And this is x. ये टोटल 134 हो गया, या फिर मैं ये बोलूं ये टोटल 105 हो गया. तो ये वाली वैल्यू 95 होनी चाहिए. मतलब ओनली बर्गर मैक्सिमम 95 हो सकता है. सो ओनली बर्गर शुड बी ग्रेटर देन 29 एंड लेस देन इक्वल टू 95. राइट. सो इस रेंज में जो भी नंबर है दैट्स माय आंसर एंड दैट्स गोइंग टू बी 93. अंडरस्टूड? क्लियर? हमें एक्स निकालने की जरूरत भी नहीं है. Total number of people are 200. Out of 200, 105 are having pizza. So remaining 95 are having only burger. So the range lies between 29 and 95. But in reality, when I'm solving, I'm just going to calculate this 29 और 96 तो मैं मार्क ही नहीं करूंगा, क्योंकि अगर 96 ट्रू है तो 93 भी ट्रू होना पड़ेगा. That's the reason answer cannot be 96. It has to be 93 only. But first, my job is to calculate one value, that's 29. This one. Okay, Akash, what did you do? Oh, nice. That's a good approach. Okay.
When they work alone, B needs 25% more time to finish the job than A does. So if A takes 4D days, then B takes 5D days. Now B का जो वैल्यू होना चाहिए, आकर जस्ट टोल्ड मी दैट जीपी का जुगाड़ वाज B को जो टोटल टाइम लगेगा वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, दैट शुड बी 20 आवर. I think that's awesome. It didn't click me actually. So ratio of time is 4 is to 5. So ratio of efficiency is going to be 5 is to 4. Okay. Now what A is doing first 50% of the job. Okay. So A is doing 50% of the work. Okay. Now then A and B together are doing 4 days. So A or B dono milke. So together they are going to do 9. So in 4 days they are going to do 36. Okay. Now B works 5% of the remaining job. So 50 plus 5%, 55% of the job. So this is going to be 45% of the job. Fine. So 45% of the total work, and that's equal to 36. So this is going to be what? 9. This is going to be 20. This is going to be 4. So work comes out to be 80. So total work is 80, efficiency. So total time taken must be 20. Now this is a longer approach. Now the shorter approach is 5D should be multiple of 5. There is only one option, that's going to be 20. Okay. Understood? This one. Suraj, I have taken efficiency of A as 5 and efficiency of B is 4. A and B are working together, so their efficiency is 9 and they are working for 4 days. So total work done by them is 36. Understood? अच्छा, ठीक है. अच्छा देखो, I'll tell you one thing. If I have to take a wild guess in this particular question, then I would go with option B. ठीक है, I'll solve later. ठीक है. 5 human and 15 human and 5 robots. ठीक है. Time taken is 30 days. ठीक. What is the total number of objects we have जो काम कर रहे हैं?
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं जो काम कर रहे हैं अभी? दैट इज 20। यहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? अभी भी 20। ठीक है। अब यहां पे 30 दिन लग रहे हैं, यहां पे 60 दिन लग रहे हैं, मतलब आदमी 1/3 हो गए, तो टाइम डबल हो गया। मतलब रोबोट्स की जो इफिशियंसी होनी चाहिए वो तो बहुत ही कम होनी चाहिए, हाँ है ना? तो अगर मैं रोबोट्स को हटा दूं तो मेरा टाइम एकदम थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, राइट? सो व्हाट शुड बी द आंसर? दैट्स गोइंग टू बी 32। दैट्स अ गेस। अंडरस्टूड? मैं लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं करूं। Now, what I am going to do, humans, efficiency of a human is 1, efficiency of a robot is R. ठीक है। सो 15 ह्यूमंस की इफिशियंसी क्या होगी? 15। 50 5 रोबोट्स की क्या होगी? दैट्स गोइंग टू बी 5 आर। टुगेदर कितना काम कर रहे हैं? 30 डेज में काम कर रहे हैं, सो इनटू 30, दैट्स माय टोटल वर्क। बाद में अगर बात करें, 5 ह्यूमंस की इफिशियंसी क्या है? 5। 15 रोबोट्स की इफिशियंसी क्या है? 15 आर। टोटल टाइम टेकन इज व्हाट? 60। This cancels out, that is going to be 2. So I'm going to get 15 plus 5r, and that's going to be 10 plus 30r. So basically क्या हो गया? 5 is equal to 25r, मतलब r should be equal to what? कितना आ रहा है? 1/5। मतलब एक रोबोट की जो इफिशियंसी है वो 1/5, तो 5 रोबोट्स की इफिशियंसी क्या होगी? 1। So what is the total work I am going to have? That is going to be 15 plus 1, that is 16 into 30. So that is my total work. इसको कर कितने लोग रहे हैं? इसको कर रहे हैं 15 लोग, 15 humans. So efficiency of 15 humans is 15. Number of days taken is D. So answer comes out to be 32. So D comes out to be 32. 32 days में काम खत्म हो जाएगा। Understood? So whenever you get two variety, men, women, men, robots, women, children, so those kind of things, whenever you get, एक की efficiency assume कर लो, दूसरी की efficiency variable में assume कर लो, and go with total work. Work assume मत कर, calculate the work according to efficiency. Understood? Yes, no? समझ आया? This one. So every time we don't assume the efficiency, we every time we don't assume the work, we assume the efficiencies as well. And a lot of question when I solve, I start with assumption of efficiency and calculate the work. Generally, it's other way around. You assume the work and calculate the efficiency. Hmm.
ओके, कैसे करेंगे इसको? हेलो पार्थ, कैसे करेंगे इसको? दैट्स द क्वेश्चन। नाउ देखो, अब यहाँ पे एक बेसिक आइडिया है, क्या है कि x इंटू वाई, अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं, पहला पार्ट x इंटू वाई की बहुत बड़ी पावर है, दूसरे में देखो x इंटू वाई की बहुत बड़ी पावर है, तो x इंटू वाई पे तीन केस बन सकते हैं। पहला केस x इंटू वाई वन से छोटा है, दूसरा केस x इंटू वाई वन से बड़ा है, एंड तीसरा केस x इंटू वाई वन के बराबर है। ठीक है, अगर x इंटू वाई वन से छोटा है तो 0.95, 0.98, इसको तुम 2000 पावर दे दो तो वैल्यू इज गोइंग टू बी एज गुड एज जीरो और नॉट? यस और नो? मैं डिवाइड ही नहीं कर रहा। 0.98 पावर 2000, वैल्यू इज गोइंग टू बी एज गुड एज जीरो और नॉट, राइट? x इंटू वाई इक्वल इज ग्रेटर देन वन, सो 1.01 ले लेते हैं। इसको 2000 पावर दे दो तो वैल्यू इज गोइंग टू बी एज गुड एज इनफाइनाइट और नॉट, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब एक ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है कि x इंटू वाई शुड बी इक्वल टू वन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एन assumption कि x इंटू वाई जो है वो वन के बराबर है। नाउ दिस बिकम्स दिस, ये तो वन हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। आई एम स्टार्टिंग विद दैट पर्टिकुलर assumption. Now this becomes x into y power 2016 into y cube, and that's equal to 8. अब ये तो वन हो गया, तो y cube comes out to be 8, मतलब y की वैल्यू इज 2। नाउ क्या x into y अभी वन आ रहा है? आर यू गेटिंग x into y as 1? Yes. It means the assumption that we have taken initially is right. It means the value of x is 1/2. So x square is going to be 1/4. Y cube is going to be 8. That is 2 cube. So answer comes out to be 33/4. That's going to be option A. Understood? Yes? No? Are we clear on this? So remember, Aryan, whichever is fine. Why you are looking for alternate approach? Another approach can be you can divide and get the answer 2018, 2017, and that's equal to 1/2. Then divide by x power 2016, y power 2019, and that's equal to 8. Divided, so you are going to get x square upon y square is equal to 1/16. So it means x by y is equal to what? 1/4. So x comes out to be y/4. अब इसको तुम किसी भी इक्वेशन में रख लो and you will get the answer. Or you can say, so x is equal to y/4.
Put it in the original equation and you will get the answer. Understood, Om? हाँ तो ये लेंदी अप्रोच है ना. नहीं करना है ये. If I am not taking x into y equal to 1, more likely I won't solve this question. क्योंकि x equal to y by 4, put y by 4 instead of x in the original equation, either of the two equations, you will get the answer. That is true. I have already calculated. I have already solved by using that particular method. That's a little lengthier, but yes, it gives the answer. This one. Okay. Okay. Girish is getting 65. Arpit and Shubhang are getting 106. Okay. शुरू कैसे करें? Ajay is getting 105. Okay. So everyone is getting different answer. Oh, nice. Okay. Om is getting 105. Rachit is also getting. Okay. So what is the starting point? So I say x plus y plus z. Okay. Akar is getting 106. Harpit is 105. Okay. So this is 240. This is what I know. That is 240. The average is of x, y, and z, that is 80. So sum is 240. Now it says that x plus y plus z plus u plus v average is 75. So 75 into 5 is going to be 375. Okay. Sorry, it is u plus v. Okay. So I'm going to get u plus v, and that's equal to what? That's equal to 135. Okay. So I can say 2u plus 2v, and that's equal to 270. Now, why I am taking 2u plus 2v? Because this, the first point says 2u is equal to x plus y. So I got x plus y plus 2v is equal to y plus z, and that's equal to 270. Okay. X plus y plus z, that is given to us as what? 240, right? That is given here. So y comes out to be 30. So y is 30. So I am getting x plus z, and that's equal to 210. Okay. Now x cannot be smaller than z. So both can be 105, 105. Now if z is greater than 105,
x will be smaller than 105. Now, in that case, z is going to be greater than x. That's not possible. So basically, lowest possible value of x is going to be 105 because x is greater or equal than z. If the question says x is greater than z, in that case, answer would have been 106. But x is not greater than z, x is greater or equal than z, that's 105. So answer of this question is going to be 105. Akar, I told you before, I'm still telling you the you won't regret the questions that you didn't know or you didn't solve. So there you want to have a night session, midnight hours. ठीक है, now this one कैसे करेंगे solve? I never thought that cat is going to ask these kind of questions in recent years. So what is the approach you are going to take in this? अच्छा हाँ ये ठीक ठीक है right. So this kind of thing is so so there we'll discuss. Don't worry. ठीक है. So basically, I got an AP 7, 11, 15. That's an AP, right? So I got 7, 11, and 15. That's an AP. ठीक है. What is the difference of an AP? That's 4, right? Are we clear on this? Now, जो सिग्मा n का फॉर्मूला है दैट इज n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये कब यूज होता है? और इफ आई से दैट सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये कब यूज होता है? कंडीशन क्या है इसकी? किसी को याद है ये? When you use this formula or when you use this formula, remember the condition is this is summation of first n natural numbers. मतलब n should be 1, n should be 2, n should be 3, n should be 4 and so on. ठीक है, बीच में ब्रेक्स नहीं होने चाहिए. ठीक है. नाउ क्या मैं पहले टर्म को 4n प्लस 3 लिख सकता हूँ? n को 1 डालो तो तुम्हें क्या मिलेगा? 7. n को 2 डालो तुम्हें क्या मिलेगा? 11. n को 3 डालो तुम्हें क्या मिलेगा? 15. n को 4 डालो तुम्हें क्या मिलेगा? 90. नेक्स्ट नंबर कैन आई राइट इट एज 4n प्लस 7. n को 1 डालो तो 11, n को 2 डालो तो 15, n को 3 डालो तो 19. कैन आई राइट इट लाइक दिस? आई एम जस्ट जनरलाइजिंग द फर्स्ट टर्म. So what I am going to get? I am going to get 16n square, 4 3 12 और 7 चौको 28 प्लस 30n
प्लस 21। ये मेरा जनरल टर्म। अगर मैं इस पे सिग्मा लगा दूं तो मेरा सम आ जाएगा। नाउ 4n+3 is equal to 95. So 4n should be equal to 92. So n कितना होना चाहिए? 23. And n should be going from 1 to 23. और बस अपना फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ गया, कैलकुलेटर ले लो। सो 16 सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज n into n+1 into 2n+1 by 6 plus 30 times n, that is 30 times n into n+1 divided by 2 plus 21n, so that is 21 into n। n की वैल्यू 23 डाल दो, तुम्हारा आंसर एज इट इज आ जाएगा। एंड हाउ टू डू इट वेरी क्विकली, बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। समझ आया? यस, नो? Everyone understood that what is the approach? So in this question, you need to generalize the first term and then solve it. Ajay, yeah, I get your point. ठीक है, but problem ये है अजय, why I am avoiding that? That is the first thing I thought of. लेकिन अगर 5 टर्म होते, 6 टर्म होते, 8 टर्म होते, I would have done the same thing that you are doing. ठीक, but there are 23 terms. ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। सो आई लाइक योर अप्रोच, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि गलती के चांसेस इसमें भी है, लेकिन उसमें मुझे लगता है थोड़े ज्यादा होंगे, because you are doing everything manually, and if there are 4 terms, 5 terms or 6 terms, I would have done the same thing that you are doing. Understood, Ajay? So in a lot of terms, doing calculating a unit digit might be little pain, but I think I'm not sure that whether I should do it or not. Now this one, it will repeat after 5 times. Okay, very nice then. I think we should have done that. Now this one, Arpit, the approach that Ajay has discussed is only valid if every option has different unit digit. And I'm not going to take Arpit, I'm not going to take your question as what if unit digits are different, because this is the question of that. उन्होंने नहीं दिया तो कुछ सोच के नहीं दिया होगा ना बेटा। गॉट इट? और अगर यूनिट डिजिट सेम है तो जो अभी किया है वही करना है हमको, और कुछ नहीं कर सकते। Now this is a question where you need to factorize. Okay, Rachit? Okay. I'm sorry. Okay, the smallest integer n such that n cube minus 11n square plus 32n minus 28 is greater than 0. Now this is a question where we need to factorize the quadratic equation. Now, does anyone know how to factorize a cubic equation? How to take hit and trial, how to make guesses?
Because in quadratic equation, if everything fails, then you go to x is equal to minus b plus minus b square upon 4ac divide by 2a, right? No, actually, no, 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 no. That's not what you are supposed to do. I'm telling you how to get the roots of cubic equation. Okay. So I am telling you that it is n cube minus 11n square plus 32n minus 20. Fine. Now the first thing, what is sum of roots? Tell me what is sum of roots? What is sum of roots in this equation? That is 11. ठीक. Now what is product of roots? That is 28. Right? Product of roots is 28. Now product of three numbers is 28 and sum of the three numbers is 11. So मेरा एक केस तो बन सकता है 7 4 1 और मेरा दूसरा केस बन सकता है 7 2 2. 7 4 1 व्हाट इज द सम? 11. नो. तो ये वाला केस तो गया. 7 2 2 व्हाट इज द सम? 11. मैच तो कर रहा है. अब अपन एक काम करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करते हैं एंड दैट शुड बी इक्वल टू 32. तो 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 2 14, 2 इंटू 2 4. डज इट मैच? Yes. So your roots becomes of this equation, that is n minus 2 into n minus 2 into n minus 7. And that's greater than 0. Got it? So if n is greater than 7, it is always going to be positive because coefficient of n cube is positive. So smallest value of n is going to be 8. Understood? Did you understand how do we factorize a cubic equation? Yes, no? समझ आया नहीं आया? ठीक है. This one. Okay, Joy. Krishav, are you sure Ajay's answer is right?
Okay. So what does it say? That is 8. देखो, फर्स्ट लाइन पढ़ के ये तो समझ में आ रहा है कि n जो होगा वो 2 की पावर में होगा, हाँ या ना? ये पढ़ के मुझे ये समझ में आ रहा है कि n जो है वो 2 की पावर में। 168 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 पावर 5, 32 इंटू 5 होता है ना? ठीक है, तो क्या मैं इसको 2 पावर 5 पावर 2 पावर 5 लिख सकता हूँ? यस और नो? मैंने 160 को फैक्टराइज ही कर लिया, दैट इज 32 इंटू 5, दैट इज 2 पावर 5 इंटू 5। सो क्या n को मैं ऐसे लिख दिया, इसको 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 5, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, हाँ या ना? कैन आई राइट इट लाइक दिस? सो यहां से क्लियरली दिख गया कि n जो है वो 2 पावर 5 है, और आई वुड से 32। व्हाट इज n स्क्वायर? n स्क्वायर इज 2 पावर 10। व्हाट इज 2 पावर n? दैट इज 2 पावर 32। इन दोनों में दो की कौन सी हाईएस्ट पावर कॉमन हो सकती है? दैट इज 2 पावर 10। सो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10। अंडरस्टूड? यस, नो? दिस वन? Yes, Siddharth, it is P1. Siddharth. अमल है, विमल है। क्या इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं? ओके सनमित, वेरी नाइस। अच्छा देखो, when I was reading the question, what logic I got, ठीक है? नो, डिफरेंस ऑफ रेशियोज की बात नहीं है। देखो, बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग दैट अमल विमल का स्कोर, आई एम जस्ट लुकिंग एट विमल्स स्कोर। इनिशियली विमल्स स्कोर वाज अ मल्टीपल ऑफ 14, यस और नो? ठीक है, फाइनली विमल्स स्कोर वाज अगेन मल्टीपल ऑफ 14, हाँ या ना? Initially, the score of
that was multiple of 14, finally again it is a multiple of 14 है ना. इसका मतलब जो मार्क्स इंक्रीज हुए होंगे वो 14 के ही मल्टीपल में हुए होंगे या नहीं हुए होंगे. यस और जो मार्क्स इंक्रीज होंगे वो 14 के ही मल्टीपल में होंगे कि नहीं. राइट. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीधे सीधे यहां पे 42 मार्क्स लेता हूं, यहां पे 33 मार्क्स लेता हूं, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर. अब यहां पे डिफरेंस आया 14 का, यहां पे भी डिफरेंस आया 14 का, और दोनों के मार्क्स सेम सेम वैल्यू से बढ़े हैं. इसका मतलब दोनों के मार्क्स इनिशियली दोनों के मार्क्स 33 और 42 होने चाहिए, और फाइनली इनके मार्क्स 47 और 56 होने चाहिए. So Bimal का final score is 56, initial score should be 42, and ratio is going to be 4:3. और दूसरी चीज और जो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं कि फाइनली जो बिमल का स्कोर है दैट इज 56, दैट इज 4 into 14. सो इसका मतलब फाइनल मार्क्स जो होंगे वो 4 के मल्टीपल में होंगे. तो मेरा आंसर या तो डी होगा या ए होगा. आई चेक विद ऑप्शन ए. क्लियर. सो ये अप्रोच ले सकते हैं. अदरवाइज इक्वेशन अगर बनाना है, सो आई टेल यू हाउ टू मेक द इक्वेशन. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट. सो इनिशियल मार्क्स आर 11x, दिस इज 14x. दोनों में y y का इंक्रीज आया, and that is equal to what? That is going to be 47:56. ठीक है. आपको x is to y का रेशियो आ जाएगा, उससे आपका आंसर आ जाएगा. बट दैट्स नॉट नीडेड. अंडरस्टूड. ये वाला. Now in this question we are going to learn a different concept of that, of quadratic. हम्म. कृतिव जस्ट गेस, क्योंकि ऑप्शन में 4:3 था ना. तो अगर एक वैल्यू 56 है, सो आई चेक्ड ऑन 42. गॉट इट. अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देर आर सर्टेन थिंग्स. एंड व्हाट आर द सर्टेन थिंग्स? कि अगर इफ आई टॉक अबाउट ax² प्लस bx प्लस c, if a is positive मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, एंड d is नेगेटिव, इसका मतलब ये ग्राफ x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा.
और इसका मतलब होता है एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि फंक्शन कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो रहा, फंक्शन आपका कभी जीरो भी नहीं हो रहा। इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ जो टच ही कर रहा है एक बार, इसका मतलब ए इज जीरो एंड डी इज यू कैन से आइदर इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो, बोथ आर फाइन। ठीक है, अगर आपका ग्राफ ऐसा बनता है इसका मतलब ए इज पॉजिटिव एंड डी इज नेगेटिव। अगर वो होगा, सो बेसिकली इसमें ये बोल रहे हैं कि फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए, इसका मतलब डी शुड बी लेस देन जीरो, और यहां पे होना चाहिए डी शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो व्हाट इज डी? दैट इज बी स्क्वायर, बी की जगह यहाँ पे ए है, माइनस 4 इंटू ए इज 2 into c, that is also 2 and that is less than 0, so I can say a square minus 16 is less than 0. So a square minus 4 square is less than 0. It means a should be lying between minus 4 and, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 32, 32 आ रहा है, 32. So B should be lying between what? Minus 4 root 2 to 4 root 2. ठीक, अब क्या, इसकी वैल्यू निकालनी है, 2a माइनस 6b, मतलब a पॉजिटिव चाहिए b नेगेटिव चाहिए। तो a में पॉजिटिव, a की पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 3, सो 3 2 6, माइनस b का क्या हो सकता है, b का -5.6 जा सकता है, तो b की जो नेगेटिव में लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगी वो होगी -5, सो 6 इंटू -5, so that is going to give us 6 plus 30 and that's going to be 36, so that is going to be the largest possible value. Understood? सो यहां पे कंसेप्ट ये है कि जब भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये बोलता है कि दैट इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब डी शुड बी लेस देन जीरो, ये होगा ही होगा। और अगर आपका अगर ए नेगेटिव है और एफ एक्स सारी वैल्यूज के लिए, एक्स की सारी वैल्यूज के लिए नेगेटिव है, तो भी डी लेस देन जीरो। अंडरस्टूड? सो इसका कंसेप्ट ही ये बनता है, क्लियर? So a is negative, d is also negative, so fx is going to be negative for all the real numbers. Largest value, we will take the maximum difference of a and b. देखो, basically the question is talking about 2a minus 6b, right शुभम? राइट शुभम? अब तुम्हें इसकी लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, अब a तो पॉजिटिव में चाहिए और b तुम्हें नेगेटिव में चाहिए, क्योंकि b के आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, हाँ या ना? तो इसका मतलब b का मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए लेकिन साइन नेगेटिव होना चाहिए, तभी तुम्हारी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अपेक्षा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आई थिंक इन 15 मिनट्स और सो, 15-20 मिनट्स, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे फिर भी स्टार्ट करेंगे, परहैप्स एट 1 o'clock, 1:15 अराउंड। ठीक है, सो एवरीवन अंडरस्टूड दैट what to be done in this particular kind of scenario जहां पे फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये जो चीज है ना, इस टाइप की चीज आप देखोगे नई नहीं है, कैट में कई बार आई है, कैट में अदर एग्जाम्स में भी कई बार आई है कि एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन जीरो, ग्रेटर इक्वल देन जीरो।
सो ये जो चीज है ये कॉमन है, तो ये पता होना चाहिए कि इसका और डी का रिलेशन क्या है। क्लियर दिस बात। कैसे करेंगे इसको? देखो, अब यहां पे एक और चीज, ज्यादा सोचेंगे समझेंगे नहीं, बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे। एबीसी है, so let's call it A, let's call it B, let's call it C. AD is a median. AD is a median. Okay, so that is D. B is also a median. Okay, let's call it E. और AD और B, ओफो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर। नाउ अब ये पॉइंट हो गया अपना सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या करता है? सेंट्रॉइड जो है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? ओह वेरी नाइस चीज। यस अर्पित, बट बिफोर दैट, जो मीडियन है, जो सेंट्रॉइड है, वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ये लेंथ 8 होगी, ये लेंथ 4 होगी, ये लेंथ 6 होगी, ये लेंथ 3 होगी, राइट? सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस? लेट्स कॉल इट जी, BGA, that is going to be half into 6 into 8. So this comes out to be what? 24. ठीक है। अब मैं ये वाला, सो बेसिकली BGA का जो टोटल एरिया है वो अपना आया 24। अब अपन यहां पे आ रहे हैं, वापस से ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, किसी को 24 तक कोई इशू एरिया निकालने में? सिद्धांत, व्हेन यू ड्रॉ मीडियंस, centroid divides a median in the ratio of 2:1। वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक 2, सेंट्रॉइड से बेस तक 1। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट है इसका। नाउ द सेकेंड पॉइंट, व्हाट आई एम डूइंग, यहां पे अपने को एरिया जो है, ये टोटल एरिया हमको पता है कि ये 24। ठीक है, तो अगर ये मीडियन है तो इसका एरिया 12 होगा, इसका एरिया 12 होगा, इसका भी 12 होगा, इसका भी 12 होगा, इसका भी 12 होगा, इसका भी 12 होगा। सो जो 3 मीडियन ड्रॉ करके 6 छोटे ट्रायंगल आते हैं, उन सारे के सारे ट्रायंगल्स का एरिया हमेशा सेम होता है। तो अगर इसका एरिया 24 है, मतलब दो छोटे ट्रायंगल्स का एरिया 24 है, मतलब एक छोटे ट्रायंगल का एरिया 12 है। सो टोटल सर्कल का जो एरिया होना चाहिए, दैट शुड बी 72। दैट्स इट, अंडरस्टूड?
So when you draw three medians, it divide a triangle into six smaller triangles of equal area. And that is the concept that is important, that is needed in this question. ठीक है? This one. हाँ, दूसरे का भी 36 ही होगा. 36 plus 36. Because if you draw a median, median divides a triangle into two parts of equal area. Now, in this type of question, what is the approach that we should take? क्या करना चाहिए? Middle term split, right? So, okay. सबसे पहले तो आई एम जस्ट गोइंग विद मिडिल टर्म स्प्लिट, दैट इज n plus 3 n plus 4 divide by n plus 3 n minus 4. ठीक है, ये तो बढ़िया. तो वैल्यू आई n plus 4 अपॉन n minus 4. ठीक है, अब देखो, वैल्यू रखना इज अ गुड थिंग, राइट? बट इन दिस आई थिंक आई कैन सॉल्व इट फास्टर देन पुटिंग अप द वैल्यूज. कैसे? जब भी whenever you see a statement like this that is variable upon variable, fine, so try to do one thing, make it into integer upon variable. So what you can do, n minus 4 plus 8 divide by n minus 4, so that comes out to be 1 plus 8 upon n minus 4. Fine. Now it is integer. Now if the whole value needs to be an integer, it means this has to be an integer. And what is the, and so it means n minus 4 has to be a factor of 8. Which is the largest factor of 8? That is 8 itself. So it means n minus 4 should be equal to 8. So what should be n? N should be 12. So what is the largest value? That should be 12. ठीक है ना? So whenever, this is a standard process, whenever you get in the variable upon variable, ठीक है, वेरिएबल अपॉन वेरिएबल के फॉर्मेट में होगा, सो अपन उसको हमेशा क्या करेंगे, इंटीजर अपॉन वेरिएबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे. So whenever we are going to convert it in the format of integer upon variable, things becomes easy. Now, in integer upon variable means denominator should be a factor of numerator, and that gives us answers very quickly. Got it? Yes, no? This one. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अच्छा देखो,
सरमित, रचित, what happened कि मैंने पहले first what I did, I factorized the equation, right? I factorized the equation, so I got n plus 3 into n plus 4 upon n plus 3 n minus 4. So basically, my final value was n plus 4 upon n minus 4. Okay. Are we clear till this point? Yes, no. यहां तक क्लियर है हम? Now the thing is, my current format is variable upon variable. Now, variable upon variable means it is going to be too tricky because I have to assume too many values and I don't have anything concrete with me. So what I do, I am always trying to make it in the format of integer upon variable. So to make integer upon variable, what I am doing, I am adding and subtracting 4 in the numerator. So my value is going to be n minus 4 plus 8 upon n minus 4. Then I am separating the terms. So I am getting 1 plus 8 upon n minus 4. So now I know if this value has to be in an integer, it means n minus 4 should be a factor of 8. If I want to maximize the value of n, it means I need the largest factor of 8. So largest factor of 8 is n minus 4. Largest factor of 8 is 8 itself. So largest value of n minus 4 can be 8. So what should be the value of n? That should be 12. So I always go with this basic concept of whenever I get an equation that is in the format of variable upon variable, I convert it into integer upon variable. Understood? Yes, no? And that is more or less case I take in all the questions. Whenever I get this format, I do this first, then I'll do something else. Make sense? This one. Shubham, you are saying answer is option one. Arpit, you are saying answer is option one. Okay. Okay. How to solve? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? वेरी नाइस आकर मैं भी यही करूंगा. So what is the first thing whenever I see these kind of things? I always put x equal to 0. So put x equal to 0, this is 0, this is 0. And log is not defined for 0. So it means this option is gone. Simple. Now log should be defined. So now both values are starting at 1. One is ending at 2, another one is ending at 3. So I'm going to put x equal to 3. So basically log base e, that is 12 minus 9 upon 3. So that is going to be log base 2, sorry, base e, that is 3 by 3, that is 1. ठीक. क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ हो रहा है. इसका मतलब आंसर शुड बी ऑप्शन 1. दैट्स इट.
समझ आया सबको? मेरे को उसमें तो बस यही नहीं, यही समझ में आता है, अगर आई एम नॉट गोइंग विद 1 2 एंड 3, आई एम गोइंग टू पुट 0 एंड देन आई एम गोइंग टू पुट 3, दैट्स इट. The basic condition of log is, if I am writing log a base b, it means b should be positive always, and a should be positive always, and a should not be equal to 1. This is the basic condition that I need to check. This one. Okay. Okay. कैसे करेंगे इसको? हाँ, what is the approach we are going to take? 5 power x minus 1 equal to a, 5 power, sorry, 3 power y equal to b. So this becomes 5a minus b. This becomes a plus 3b. ऐसे, अरे ऐसे ही तो नहीं करना है भाई, नहीं करना है ये सब. अच्छा देखो, what is the value of 5 power 6? That is 3125. है ना? 5 power 3 is 125. नहीं, 5 power 4 is 625. 5 power 5 is 3125. ठीक है. 5 power 6 is going to be 15,000 something. ठीक. अब 5 power x should be greater than this number. So makes sense if x is 6. Right. Now this is going to be, if this is 15,000 something, then it should be 2,000 something. Right. Now if this is 15,000 something, then this is 3,000 something, then it should be 6,000 something. So 3 की पावर 1 से बढ़ के 6,000 कुछ बनेगा, तो मतलब सब मैच कर जाएगा. Right. So basically 3 power 6 is 729. So it should be 3 power 7, and it should be 5 power 6, and it matches. ठीक है ना? Understood what we are doing and why we are doing? I am just going with कि पहला वाला नंबर 15,000 समथिंग है, उससे 2,000 समथिंग माइनस करेंगे तो 3,000 समथिंग आएगा. अब 5 पावर x माइनस 1, 5 की पावर 1 से कम हो गई, मतलब 3,000 समथिंग ये नंबर है. इस
इसकी पावर एक से बढ़ गई, मतलब 2000 समथिंग इंटू 3 इज गोइंग टू बी 6000 समथिंग। क्या इन दोनों का सम 9000 समथिंग आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब the assumptions that I have taken are right. It means x should be equal to 6 and y should be equal to 7. So what is the value of x plus y? That comes out to be 7. Sorry, that should be 13. So answer आ गया इसका 13. Value नहीं निकालनी है. Linear equations are going to be very difficult. Look at the number 13,438. अनुष्का अभी तो ये कर रहे हैं हम. It's additional mock. If you wish to write, you should. अर्पित फैमिलियर तो है, बट डू यू नो हाउ टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन? सिद्धांत, I am just writing down the powers of 5 and powers of 3 and seeing. So in the first case is directly telling me that 5 power x should be greater than 13,000 and 1 lower power should be less than 9,000. And so it means the one power difference should be from less than 9,000 and more than 13,000. So only one range that satisfies is 5 power 5 and 5 power 6. Understood? Siddhant. This one. ABC are non-zero, 14 power A and 36 power B. And this is going to be the last question of quant. And then we are going to take some break. Then we are going to start LR. In LR, not all are PYQs. There are some different sets also we have. This one. Whenever I see these kind of questions, what is the first thing that I do? I always assume that this is equal to this one. Harsh, fx a is greater than 0, then fx cannot always be less than 0. In that case, d is going to be positive, so that in some cases fx is less than 0 and in some cases fx is greater than 0. Understood, Harsh? Now, Shubhang, I'll tell you why your answer has to be wrong, because this is a theta question and answer of a theta question can't be negative. Got it? So the first thing I am writing is 14 is equal to k power 1 by a. 36 can be written as 6 power 2b and that is equal to k. So I can say 6 is equal to k power 1 by 2b. And 84 can be written as what? K power 1 by c. Okay. Now you need to understand that there is a relation between the numbers, that is this. Now 14 is k power 1 by a into k power 1 by 2b and that is equal to k power 1 by c. This is what I know. So I can say that 1 by a plus 1 by 2b
is equal to 1 upon c. Because bases are same, powers are added. So I can directly say that 1 by a minus 1 by c, and that is equal to, mm, oh, I made a mistake. That is equal to 1 upon 2b. So I can say 2b into 1 by c minus 1 by a, and that is equal to 1. But this question is talking about 6b. So if I multiply both sides with 3, am I going to get the answer? Yes. So answer of this question directly comes out to be 3. Understood? Yes, no. So whenever I see this kind of question, I always do this, always, without an exception. And it might be little trickier, but I always get the answer right. Sometimes you might say sometimes it may get lengthier. Okay, it's fine. But am I getting my answer right? Yes. Will I be able to solve this question in maximum 2.5 minutes? Yes. Because the approach is very standard. And whenever the numbers are given over here, remember this, that there has to be some relation between the numbers. There has to be. Yes, Shubham, you can also take a log. I am telling you my approach. I'm not saying that you are wrong. I am saying it's my approach. I always go with constant. You can take log, you can still get the answer. That's a good approach. Fine. Now, as you know, there only the last 7 days are remaining for the CAT, and there is going to be a session about it. And okay, so we are going to take a break for some time. Let's say 15 minutes. Let's meet after 15 minutes right now, right here. Uh, and we are going to start with the LR. Fine. So till then, I'll put up my PPT over here, and you can see which is the first set we are going to start. That is this one, and I'm sure you have solved this set more or less. Few sets I have taken of this. This is happiness index. I always like this one. This is easy one. This is, I'm not sure a lot of people have solved. This is again a different variety of question. This is, I think I have a different approach of solving this question. Okay. And this is a question of mock where everyone was troubled. And this is also a question of mock that has very low attempts. So these are the things that we are going to cover today. Fine. So let's start with 15 minutes of break and then continue. Okay.
Hello, welcome back, everyone. Yes, Dhruv, I think it should be. I think it could have been a calculation error, but I think you got a gist of it. हो सकता है calculation error हो सकता है 40n हो सकता है ठीक है I'm not saying I'm right and now that I think of it should be 40n only ठीक है so now let's start with LRDI now we are going to start with the first set okay so when we are going to solve LRDI what is the first thing you should do let's start from that particular point कि starting point क्या होना चाहिए किसी भी LR स्टार्ट कैसे करेंगे it's not about being right being wrong but what is the general approach of LRDI standard one table okay Shubham, always remember that in most of the cases when we talk about LRDI tables we need to make tables right this is what you know this is what I know but before doing anything I am going to read the questions how many mango trees were there in total okay what is the correct sequence of trees okay इसका मतलब सेकेंड क्वेश्चन की हेल्प हम ले सकते हैं हाउ मेनी पाइन ट्रीज डिड चित्रा रिसीव ओके हु गॉट द प्लॉट with the smallest number of trees and how many trees were there in that plot which of the statement is not true okay so basically I am going to have three possible questions जिससे मुझे हेल्प होगी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 so I am going to read the statements and now I am going to understand everything farmer had rectangular land containing 205 trees. ठीक है. He distributed the land among four of his daughters, Abha, Beena, Chitra, and Deepthi, by dividing the land into 12 parts, जो हमें दिख रहा है टेबल में, that is XYZ 1, 2, 3, 4. The plot XYZ contained mango, pine, mango, teak, and pine trees. Okay. So the first one is mango. तो यहाँ पे आ गया मैंगो जितने ट्रीज आएंगे सारे मैंगो के होंगे यहाँ पे at this point we are going to get teak at this point at this place in Z I am going to get pine and each plot has trees non-zero multiples of 3 and 4 and none of the plots have same number of trees okay now this is a good information okay now what is going to happen each daughter got an even number of plots. So there are how many daughters we had? We have four daughters, A, B, C, D, right? So A, B, C, and there is one more Deepthi. So A plus B plus C plus D is equal to 12 plots. Okay. Now it can be everyone is getting equal number of sorry one is getting even number of plots so I can get 4 4 2 2 I can also got 6 2 2 2 ये अपने पास पॉसिबल अरेंजमेंट है नंबर ऑफ प्लॉट्स के ठीक है now what does it says okay in the figure the number of the mention ठीक है ये तो गिवन ही है some information is erased that we already know ठीक है एंड तो यहाँ पे जो गिवन है वो अपन यहाँ पे लिख लिए ठीक है ये हमको पता है कि ये मैंगो है ये टीक है और ये पाइन है every value that I'm going to place in is going to be multiple of either 3 or 4 ठीक है मैंगो टीक एंड पाइन सबसे पहली चीज तो ये है कि a plus b plus c plus d is equal to 12 so I got two possible arrangements that is 4 4 2 2 and 6 2 2 ये
बस एक पॉसिबिलिटी है, अजम्पशन है, जो अभी तक हम लेके बैठे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू रीड स्टेटमेंट्स वेरी क्विकली दैट इज गोइंग टू टॉक अबाउट प्लॉट्स, क्योंकि एक बार ये चीज सॉर्ट हो गई तो आधी चीजें सॉर्ट हो जाएगी. ठीक है. लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन अ प्लॉट वाज 32. ठीक है. ट्रीज both Abha and Bina. Point number 4. Shubham, try to understand. There are 12 plots. 4 into 3. There are 12 plots. So basically, A, B, C, D in total are getting 12 plots. And everyone, how is it? How is that relevant? Okay. कुछ तो होगा. The question is talking about, if you look at this question number 2. इट इज नंबर ऑफ ट्रीज. तो तुम प्लॉट में तुम ट्री निकाल लोगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा ये प्लॉट किसका है, तो तुम उसके टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे निकालोगे? राइट. सो तुम्हें वो तो चाहिए. ठीक. नाउ यहां पे फोर्थ पॉइंट, बोथ आभा एंड बीना गॉट हायर नंबर ऑफ प्लॉट्स देन दीप्ति. मतलब आभा और बीना दोनों के पास दीप्ति से ज्यादा प्लॉट है. इस केस में दोनों के पास दीप्ति से ज्यादा प्लॉट नहीं है. इसका मतलब ये होगा कि आभा के पास 2 प्लॉट हैं, सॉरी 4 प्लॉट हैं, बीना के पास भी 4 प्लॉट हैं, चित्रा के पास 2 प्लॉट हैं और दीप्ति के पास 2 प्लॉट. ओके. ये वाला स्टेटमेंट हमने यूज कर लिया. ओनली बीना, चित्रा एंड दीप्ति गॉट कॉर्नर प्लॉट्स. ठीक है. ठीक है. Bina is the only one who got plot in each row and each column. So Bina is definitely getting 4 plots. Chitra and Deepthi did not get adjacent plots. Okay. The number of mango trees. अच्छा, देखो. Deepthi got 2 adjoining plots in same row. ठीक. और दीप्ति को 2 प्लॉट मिल रहे हैं. इसका मतलब दीप्ति के जो 2 प्लॉट होने चाहिए वो या तो ये होने चाहिए या फिर ये होने चाहिए, क्योंकि बीना, चित्रा एंड दीप्ति आर गेटिंग कॉर्नर प्लॉट्स. ये दोनों का केस नहीं बन सकता. शुभम, ओके, आई एम गोइंग टू गो विद अनदर स्टेटमेंट. ईच डॉटर गॉट इवन नंबर ऑफ प्लॉट्स. हर बेटी को इवन नंबर ऑफ प्लॉट्स मिले हैं, मतलब 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे या 6 मिलेंगे. ठीक. अब और 4 नंबर्स का सम 12 है, तो बेसिकली 4 is not a possible outcome. Sorry, 4422 is a possible outcome. 6222 is also a possible outcome. 135 नहीं हो सकता क्योंकि सबको इवन नंबर ऑफ प्लॉट्स मिल रहे हैं. और यहां पे ये बोल रहा है कि आभा और बीना दोनों को दीप्ति से ज्यादा प्लॉट मिले हैं, जो कि इस वाले केस में ट्रू नहीं हो रहा है. इसका मतलब द ओनली पॉसिबल अरेंजमेंट यू कैन हैव इज दिस. ठीक है. एनी नंबर का सम नहीं बन सकता क्योंकि यू कांट गिव ऑड नंबर ऑफ प्लॉट्स टू एनीवन. ठीक. अब यहाँ पे बीना के पास कॉर्नर प्लॉट है, चित्रा के पास कॉर्नर प्लॉट है, दीप्ति के पास कॉर्नर प्लॉट है. ठीक है. तो अब दीप्ति के या तो ये दोनों प्लॉट होंगे या दीप्ति के ये दोनों कॉर्नर प्लॉट होंगे. ये वाला कॉर्नर तो गया, ये सी के पास है, ये वाला कॉर्नर बी के पास है. तो दीप्ति के पास ये वाला प्लॉट नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन कॉर्नर मिलना है तो ये दोनों मिलेंगे या तो ये दोनों मिलेंगे, क्योंकि पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है कि दीप्ति को एडजॉइनिंग प्लॉट्स मिले. ठीक है. उसके बाद इफ आई रीड पॉइंट नंबर 8, चित्रा एंड दीप्ति डिड नॉट गेट प्लॉट्स विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर. इसका मतलब दीप्ति के ये दोनों प्लॉट तो नहीं हो सकते. तो इसका मतलब दीप्ति के प्लॉट्स कौन से होंगे? cannot be bottom. So which of the plots Deepti can have? That's going to be the upper ones. Understood? So ये प्लॉट होगा दीप्ति का.
ये प्लॉट भी होगा दीप्ति का, और ये प्लॉट होगा बीना का, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज बीना इज द ओनली वन हु गॉट प्लॉट इन एवरी रो एंड एवरी कॉलम। ठीक है, ये वाला कॉर्नर प्लॉट, ये वाला कॉर्नर प्लॉट बीना का ही हो सकता है। क्यों हो सकता है? ठीक है, क्योंकि ये वाला प्लॉट ए का नहीं हो सकता, क्योंकि ए को कॉर्नर प्लॉट मिला ही नहीं। ठीक, दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि सी को टोटल दो प्लॉट मिले हैं, एक प्लॉट ये है, एक प्लॉट ये है। तो इसका मतलब ये वाला प्लॉट सी का भी नहीं हो सकता, डी का भी नहीं हो सकता, तो केवल बी का होगा। Now, in this row, B got a plot. In this row, B got a plot. In this row, B got a plot. So, in this row, B must get a plot. So, either this or this. In this column, B got a plot. In this column, B got a plot. So, in this column, B must get a plot. So, ये वाला plot भी B का होना चाहिए. Because B is getting in every row and every column. ठीक. सो अपने पास तो बी के 4 प्लॉट सेटल हो गए, सी के 2 सेटल हो गए, डी के 2 सेटल हो गए, तो बाकी बचे 2 प्लॉट ए के होने चाहिए, क्योंकि ए के पास 4 प्लॉट। तो नाम तो सबका आ गया। ठीक है, ये गया, ये स्टेटमेंट पूरा यूज हो गया। सो पॉइंट नंबर 4 हमने यूज कर लिया, पॉइंट नंबर 5 यूज कर लिया, पॉइंट नंबर 6 यूज कर लिया, पॉइंट नंबर 7 यूज कर लिया, पॉइंट नंबर 8 यूज कर लिया। दैट्स इट। अब हमारा काम है आगे सॉल्व करना। ठीक है, the number of mango trees was double the number of teak trees. ठीक, अब ये तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, यहां पे आते हैं। सो बेसिकली m इज इक्वल टू 2t, ये हमको गिवन। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम कि ये वाले पॉइंट पे आते हैं। द टीक ट्रीज इन कॉलम 3 वाज डबल दैट ऑफ इन कॉलम 2 बट हाफ ऑफ दैट इन कॉलम 4। सो अगर यहाँ पे टी ट्रीज हैं तो यहाँ पे 2t होंगे, यहाँ पे कितने होंगे? 4t। ठीक, सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टी ट्रीज वी गॉट? दैट इज 21 प्लस 70। ठीक, सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज वी गॉट? दैट इज 42 प्लस 14t। हाँ है ना? इसका मतलब मैंगो ट्रीज जो होने चाहिए वो 7 के मल्टीपल होने चाहिए। ठीक, तो अपना आंसर क्या बन सकता है? और अगर t की वैल्यू तुम 3 भी ले लो, अब यहां पे जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो 3 का मल्टीपल या 4 का मल्टीपल होगा। Rachit, if you look at point number 3, number of teak trees in column 3 was double that of in column 2 and was this value is half of this. ठीक है, so that I am getting from this. ठीक, अब t की वैल्यू जो है, नंबर ऑफ प्लॉट्स जो नंबर ऑफ वो है, वो क्या हो सकते हैं? या तो 3 होंगे, 3 के मल्टीपल में होंगे, या 4 के मल्टीपल में होंगे। तो इसकी मैं लोएस्ट वैल्यू 3 भी ले लूं तो ये वैल्यू 84 या उससे बड़ी होनी चाहिए। हाँ है ना? इसको मैं 3 ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अगर मैंने इसको 3 ले लिया तो यहाँ पे 12 ट्रीज हो जाएंगे और यहाँ पे भी 12 ट्रीज हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ है ना? यहां तक क्लियर है हम? यस, नो? इसका मतलब t की मिनिमम वैल्यू 4 हो सकती है। मतलब ये वैल्यू 29 प्लस 21 प्लस 28 49 हो सकती है मिनिमम वैल्यू। मैं बस ये लेके चल रहा हूं, यहां तक हम क्लियर है? अच्छा देखो, t की वैल्यू देखो, नंबर ऑफ ट्रीज इन एवरी प्लॉट इज अ मल्टीपल ऑफ आइदर 3 और 4। तो t की वैल्यू 3 हो सकती है, t की वैल्यू 4 हो सकती है, t की वैल्यू 6 हो सकती है। तो मैंने t की वैल्यू 3 ले ली,
तो यहाँ पे 12 ट्रीज हो गए, यहाँ पे भी 12 ट्रीज हैं जो पॉसिबल नहीं है। सो टी की मिनिमम वैल्यू 4 हो सकती है, मतलब यहाँ पे 49 ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से फटाक से कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी मैंगो ट्रीज वर देयर इन टोटल। 49 तो नहीं हो सकता, ठीक। 84 भी नहीं हो सकता। अगर 98 लिया तो ये कितना होगा, 49। ठीक। अगर 126 लिया तो टीक ट्रीज कितने होंगे, 63। इन दोनों का सम कितना आ गया, 189। ट्रीज कितने बचे, 16, क्योंकि 205 ट्रीज है, राइट। तो यहां पे पाइन ट्री 16 ही है क्या, 28 प्लस 9 तो ऑलरेडी दिख रहे हैं। तो क्या 126 मैंगो ट्रीज हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमको 205 गिवन है, उसमें अगर मैंगो 126 है तो टीक जो होगा वो उसका हाफ होगा, मतलब 63 होगा। तो उन दोनों का सम 189 आ गया। टोटल ट्रीज आपके पास 205 है, मतलब पाइन ट्री 16 होंगे। क्या पाइन ट्री 16 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसका मतलब व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज, दैट शुड बी 98। पहला आंसर तो आ गया। मैंगो ट्रीज टोटल कितने हैं, वो 98 है। तो टीक ट्रीज कितने हैं, 49 है। 49 का मतलब ये वाली वैल्यू 4 है, ये वाली वैल्यू 8 है, और ये वाली वैल्यू 16 है। ये अपना पहला आंसर। अंडरस्टूड। यस, नो। ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आभा के पास कितने ट्रीज हैं। आभा के पास चित्रा से 20 ज्यादा है, ठीक है, और दीप्ति से 6 कम। ठीक, ये पता है मुझे। ठीक है, आभा के पास चित्रा से 20 ज्यादा और दीप्ति से 6 कम। ठीक है, सो अब देख लेते हैं इसको। तो आभा के पास चित्रा से 20 ज्यादा होने चाहिए, तो ये 50, ये 30, 60, 40, 44, 24, 54, 34। ठीक। चित्रा के पास कितने पाइन ट्रीज है, चित्रा के पास 12 ट्रीज, तो ये हो गए। ठीक, चित्रा के ट्रीज निकाल रहे हैं। चित्रा के पास 12 ट्रीज ये हैं, यहां पे कितने पाइन ट्री है मुझे नहीं पता। ठीक, तो 12 प्लस 15, 27। चित्रा के पास 27 ट्रीज हो सकते हैं, 33 ट्रीज हो सकते हैं, 42 ट्रीज हो सकते हैं, और 30 ट्रीज हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन तो यही बोल रहा है कि चित्रा के पास इनमें से कोई ट्री होने चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन में देख लो चित्रा के पास कौन सी वैल्यू मैच कर रही है। कौन सी वैल्यू मैच कर रही है चित्रा के पास। वैल्यू मैच कर रही है 30 की। इसका मतलब सबके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ गए। इसके बाद इसका मतलब ये है कि चित्रा के पास 18 पाइन ट्री होने चाहिए। ठीक है, तो चित्रा के पास टोटल 30 ट्री हैं, तो आभा के पास कितने ट्री होने चाहिए, 50 होने चाहिए। ठीक। अब आभा के पास 50 तो हो गए। अच्छा, आभा का कितना हो गया, अच्छा आभा का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इतनी मेहनत भी नहीं करनी, सॉरी। उसके बाद, अच्छा यार एक्चुअली ब्लंडर ये हो गया कि आभा के पास टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमारे पास ऑलरेडी है। ये 21 है, ये अपना ए है, ये अपना ए है। सो बेसिकली ये, अगर ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते तो जल्दी आएगा। चित्रा के पास अगर 30 ट्रीज हैं तो आभा के पास 50 ट्री। ठीक है। अब बीना के पास कितने ट्री होंगे। सो बेसिकली यहां से मुझे ये पता चल गया अभी तक कि मैंगो में 98 ट्रीज हैं, इसमें 49 हैं, तो इसमें कितने होने चाहिए।
147, 53 प्लस 5, 58 ट्रीज होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने ट्रीज होने चाहिए? 18, 28, 46, 46 और 9, 55। यहाँ पे 3 ट्रीज होने चाहिए, राइट। अगर ये वाली वैल्यू आ गई तो लोएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज किसके पास हो सकते हैं? बीना के पास। कौन से वाले? 3 ट्रीज। क्योंकि जो भी नंबर ऑफ ट्रीज होंगे वो या तो 3 के मल्टीपल होंगे या 4 के मल्टीपल होंगे, राइट। सो बीना के पास मिनिमम नंबर ऑफ ट्रीज 3 है किसी एक प्लॉट, एंड दैट इज दिस, कॉलम 1 रो 3। अंडरस्टूड? सीधे इसका भी आंसर आ गया। और बीना के पास टोटल नंबर ऑफ ट्रीज अपने पास कितने हैं? इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 69 ट्रीज है। अब बीना के पास 69 में क्या हो गया? 69 में 8 ये हो गए, 28 ये हो गए, तो कितने हो गए? 36, 36 प्लस 3, 39। मतलब इसमें कितने ट्री होने चाहिए? 30 ट्रीज होने चाहिए। कोई एक प्लॉट है जिसमें 32 ट्रीज हैं, अब वो अभी तक गया नहीं है किसी के पास, तो इसका मतलब वो दीप्ति के पास ही होगा। सो इट कैन बी 32 एंड 24, और इट कैन बी 24 और 32। So, which of the following is not true? Chitra got 12 mango trees. Chitra got 12 mango trees. That is given in the question itself. So, that is true. Deepti got 56 mango trees. That is also true. Abha got 41 teak trees. That I think should be false. Nahi, Abha, that is also true. Beena got 32 pine trees. That is false. उसको 30 कुछ मिल रहा है, right? Which column had the highest number of trees? So highest number of trees अगर निकालें तो वो कहाँ हो सकते हैं? अगर मैं इसको चेक कर लूं, 12, 21, 3, 30, 4, 18, so this comes out to be 52. 24, 16 और 28. Even if I take a lower value, this number is going to be very high. That is going to be 40, 68. So column number 4. शुभम, डी का टोटल नंबर ऑफ ट्रीज डेफिनेट है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज डेफिनेट है। देखो, आभा के पास अगर 50 है, देन आभा के पास दीप्ति से 6 कम है, मतलब दीप्ति के पास 56 ट्रीज है। अब 56 में से, और क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन अ प्लॉट वाज 32। ठीक है, इसका मतलब 30, कोई एक प्लॉट है जो 32 के पास है, लेकिन सॉल्व करने के बाद ये पता चल रहा है ना तो वो ए के पास है, ना वो बी के पास है, ना वो सी के पास है, इसका मतलब डी के पास होगा। ठीक है, डी के किस प्लॉट में है ये नहीं पता। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 32, 8 और 9 भी ले लूं तो भी यहाँ पे 49 बनेगा, तो मैक्सिमम नंबर जो चीज होंगे वो कॉलम 4 में आएंगे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी कॉलम 4। अंडरस्टूड? अब बताओ, इस सेट में किसी को कोई भी डाउट? I made a mistake in this question. I should have started with question number 3, then go to question number 2, then go to question number 1. I think that would have been a better approach, but I started with question number NK. When I can calculate the answer, why would I mark CBD? Which column has the highest number of trees? क्वेश्चन ये बोल रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज, तो यहां पे कितना होगा? 24, 36, 34, 52। मैं यहाँ पे लार्जर वैल्यू ले रहा हूँ, 32 ले रहा हूँ, यहाँ पे 8 ले रहा हूँ, यहाँ पे 9 ले रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी 49। यहाँ पे 24 ले रहा हूँ, यहाँ 16 ले रहा हूँ, यहाँ 28 ले रहा हूँ, आई एम गेटिंग 68। ठीक, अगर मैं 32 लूंगा तो मेरी वैल्यू 72 हो जाएगी। Whether this value is 68 or 72, it is always going to be largest. Is it or is it not? Yes, no?
Okay. 98, पहला वाला आंसर 18, मीना 3 trays, 32 and 4. Okay. Now this one. This is a set that I think it was tricky. The first two questions are extremely easy, next two are difficult. When this question appeared in CAT, this is a set of happiness index, and I think this has taken out happiness of a lot of people. This is a bad set. So, what is the first thing we are going to do here? Questions. Very nice, Stuti. Questions. Very nice, Shubham. Amanda's score in F, Zuma's score in S. It means, and these two are theta, as well as even if they have options. इसका मतलब इन दोनों की डेफिनेट वैल्यू तो आएगी ही आएगी. 10 केस बने, 20 केस बने, 50 केस बने, किसी भी केस में, हर केस में इन दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बाकी वैल्यूज चेंज हो सकती है. पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं. ठीक. Now, this one. Question number 3, it's a conditional one. Question number 4, that is also conditional. ठीक है. तो सॉल्व करते हैं इसको. Read the questions. Siddhant, I think today evening. ऊपर वाले इंफॉर्मेशन तो बिना काम.
हम्म, अच्छा, अगर मैं एमडा और कैला के बारे में, ए और सी के बात करूं, ए और सी के बारे में बात करूं, ए और सी का जो टोटल सम है वो 7 है, और तीनों पैरामीटर्स में आइडेंटिकल स्कोर है। सो तीन नंबर्स का सम 1 कैसे बन सकता है? तीन नंबर्स का सम 7 कैसे बन सकता है? व्हाट आर द अरेंजमेंट्स? हम्म, कैसे बन सकता है तीन नंबर्स का सम 7? हम्म, 4 to 1, 1 to 4, ठीक है, और कैन आई हैव 5 1 1? कैन आई हैव 3 3 1? कैन आई हैव 3 2 2? यस और नो? क्या ये सारे पॉसिबल अरेंजमेंट हैं? इन सारे ये सारे नंबर ऐड होके सात तो बना रहे हैं, ठीक। अब दोनों का स्कोर एस में सेम है, तो इसका मतलब जो दो है वो दो बार आना चाहिए। तो किस में आ रहा है? सी में आ रहा है। दूसरे पैरामीटर में भी दो दो बार आना चाहिए, क्या वो ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। 2 2 3 पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे दो दो बार आ रहा है, यहां पे दो दो बार नहीं आ रहा है, तो मैं दो दो की रेटिंग दो कंट्रीज को नहीं दे सकता है। इसका मतलब ये वाला केस तो गया। अंडरस्टूड? ठीक। अब तीनों केसेस को अगर लो तो एक रेटिंग जो है वो 1 की आ रही है, हाँ या ना? और 1 को दो बार तुम कहां दे सकते हो? कौन सी कैटेगरी में? एस में तो 1 दो बार नहीं आ रहा, सी में भी 1 दो बार नहीं आ रहा, 1 दो बार कहां आ रहा है? एफ में। तो केस चाहे कुछ भी बने, चाहे 5 1 1 का बने, चाहे 3 3 1 का बने, चाहे 4 2 1 का बने, और 5 1 1 का केस भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एफ में तो दो बार 1 दे दोगे, लेकिन सी में दो बार 1 नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो पहला केस बनेगा या तो 4 2 1 का बनेगा या 3 3 1 का बनेगा। दोनों केसेस में अगर 1 देना है तो एफ ही दो बार दिया जा सकता है। अमडा का स्कोर एफ में क्या है? व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? अंडरस्टूड? कोई डाउट किसी को यहां तक? रचित, I can have two arrangements. I can have either 3 3 1 और I can have 4 2 1, ठीक है। अगर मैं 4 2 1 देता हूं तो चार में दो किसको दे सकता हूं? एस में 4 4, एफ में एक एक, दो में किस में दे सकता हूं? सी में दो दो।
दैट इज वन अरेंजमेंट। अगर मैं तीन तीन एक दे रहा हूं तो तीन तीन, एक एक और तीन तीन, क्या मैं ऐसे सम बना सकता हूं? ये पहला अरेंजमेंट, एग्जैक्टली सेम स्कोर इन ऑल थ्री पैरामीटर्स। कैन आई मेक इट लाइक दिस? सेवन बनाना है, यस और नो? या तो मैं 4 2 1 लूंगा। देखो, अगर हर पैरामीटर में सेम आ रहा है तो वन अगर दो बार आ रहा है तो वन एफ में ही आ सकता है, क्योंकि एफ में वन दो बार आ रहा है। ठीक है, सी में दो बार नहीं आ सकता क्योंकि सी में एफ आया ही एक, सी में वन आया ही एक बार है, राइट? सो बेसिकली आई कैन मेक आइदर दिस अरेंजमेंट और दिस अरेंजमेंट। इन दोनों केसेस में ए और सी का, एफ का जो स्कोर होगा वो अपना वन ही हो सकता है, और तो कुछ आ ही नहीं रहा। गॉट इट? एंड इट सेज आइडेंटिकल स्कोर इन ऑल द पैरामीटर्स। मतलब अगर एक का चार आया है तो दूसरे सेम पैरामीटर में दूसरे का भी चार ही आया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, नो? नाउ इट इज क्लियर? शुभम, देवांशी, रचित? रचित, सी में कैसे वन आएगा? सी में, इफ यू लुक एट सी, सी में वन कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। और दोनों कंट्रीज को तुम वन वन कैसे दोगे? उसके लिए तो सी कम से कम दो बार आना चाहिए, राइट मुकुंद? क्या तुम दो बार वन दे सकते हो कैटेगरी सी में? कैटेगरी एस में वन आ ही नहीं रहा, कैटेगरी सी में वन एक बार आ रहा है, लेकिन दो कंट्रीज को वन देना है। क्या मैं सी में डाल सकता हूं? मैं सी में दो दो बार दो तो दे सकता हूं, लेकिन दो बार एक नहीं दे सकता। मुकुंद, आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? यस और नो? बिकॉज लुक एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, दैट इज वन, एक ही बार आया। गॉट इट? ओके, नाउ व्हाट इज जूमा's स्कोर इन एस? जूमा का स्कोर एस में क्या है? ठीक है, अब हम समझते हैं आगे इसको। जूमा का स्कोर अपन को, ओके, अपेक्षा फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सो फ्रीक्वेंसी टेबल क्या कह रही है? एक मिनट, बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, मैंने बस जो ग्राफ गिवन है हमको, हमें ग्राफ क्या गिवन है? हमें ग्राफ ये बोला हुआ है कि ये जो टेबल है यही दी हुई है। ठीक है, हेलो राहुल। सो ये जो टेबल गिवन हुई है, दी हुई है, ये 10 कंट्रीज के लिए दी हुई है। इसमें बोला है कि एस कितनी बार, किस रेटिंग पे एस कितनी बार आ रहा है, एफ किस रेटिंग पे कितनी बार आ रहा है, सी किस रेटिंग पे कितनी बार आ रहा है, और 10 कंट्रीज के लिए बात हो रही है। तो एस की अगर तुम देखो टोटल फ्रीक्वेंसीज, एक एस की कैटेगरी में वन रेटिंग किसी की भी नहीं है, दो रेटिंग भी किसी की नहीं है, तीन रेटिंग तीन कंट्रीज की है, चार रेटिंग तीन कंट्रीज की है, पांच रेटिंग दो कंट्रीज की है, छह रेटिंग एक कंट्री की है, और सात रेटिंग एक कंट्री की है। सो ओवरऑल रेटिंग्स फॉर द कंट्रीज आर 10, 10 है सबका। इन एफ एक दो बार आ रहा है, दो एक बार आ रहा है, तीन दो बार आ रहा है, चार एक बार आ रहा है, पांच तीन बार आ रहा है, छह आ ही नहीं रहा, और सात एक बार आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स आर 10, क्योंकि 10 ही कंट्रीज है। सेम गोज फॉर सी, एक एक बार आ रहा है, दो तीन बार आ रहा है, तीन तीन बार आ रहा है, चार एक बार आ रहा है, पांच आ ही नहीं रहा, छह एक बार आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स दैट आर गिवन आर 10। अंडरस्टूड अपेक्षा? ये समझ में आया कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब कितनी बार कौन सी वैल्यू आ रही है। तीन कंट्रीज को रेटिंग इन कैटेगरी एस, तीन कंट्रीज को रेटिंग तीन मिली है, तीन कंट्रीज को रेटिंग चार मिली है।
दो कंट्रीज को रेटिंग 5 मिली है और एक कंट्री को रेटिंग 6 मिली है और एक कंट्री को रेटिंग 7 मिली है। इन एफ दो कंट्रीज को रेटिंग 1 मिली है, एक कंट्री को रेटिंग 2 मिली है, दो को रेटिंग 3 मिली। यस शुभम, हर चीज हर बार कितनी बार आ रही है, दैट्स व्हाट इट इज। नाउ ओके, लेट्स गो बैक टू दिस क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एस प्लस एफ प्लस सी एंड दोनों का स्कोर 7 है और तीनों पैरामीटर में आइडेंटिकल स्कोर है। तो इसका मतलब अगर मैं 3 2 2 लेता हूं तो इसका मतलब मुझे 3 2 बार चाहिए, दो भी 2 बार चाहिए और दो भी 2 बार चाहिए। क्या मैं 2 2 बार ला सकता हूँ? हाँ, सी में है। क्या मैं 2 2 बार ला सकता हूँ? एफ में नहीं है, एस में भी नहीं, तो ये वाला केस तो नहीं बनेगा, राइट। अब मैं इसकी जगह 5 1 1 ले आता हूं, तो 5 1 1 5 1 1, सॉरी, सी में तो 1 2 बार नहीं आ रहा, एफ में भी, एफ में 1 2 बार आ रहा है तो यहां तो आ सकता है, यहां पे नहीं आ सकता, ठीक। क्या एस में 1 2 बार आ सकता है? वो भी नहीं आ सकता, मतलब ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं होगा। अंडरस्टूड। और बाकी जो दो केस बनेंगे मेरे पास, 4 2 1 और 3 3 1 का, उन दोनों केसेस में जो एक रेटिंग 2 बार देना है वो तुम एफ में ही दे सकते हो, क्योंकि एफ में ही 1 2 बार आ। अंडरस्टूड, अब क्लियर है? यस और नो? मैं इसको 4 4 2 2 भी बना सकता हूँ, और मैं इसको 3 3 1 1 और 2 2 भी बना, सॉरी 3 3 भी बना सकता हूँ, दोनों ही केस पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन दोनों केसेस में एक ही एफ की रेटिंग जो होगी वो 1 होगी, ठीक। अब सबको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर? एफ का वैल्यू 1 आएगी, ठीक। ठीक है देवांशी, आर वी क्लियर ना हो? देवांशी, अपेक्षा, शुभम, ओके। अब अपना काम है कि जूमा का स्कोर क्या है, ठीक। अब आते हैं जूमा पे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि इनिशियल अगर इंफॉर्मेशन पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि 3 कंट्रीज दैट वर कैटेगराइज्ड एज हैप्पी, और तीनों कंट्रीज जो हैं उनका एग्जैक्टली एक पैरामीटर में हाईएस्ट है, ठीक। एस में हाईएस्ट क्या है? 7। एफ में हाईएस्ट क्या है? 7। सी में हाईएस्ट क्या है? 6। थ्री कंट्रीज आर कैटेगराइज्ड एज हैप्पी, और तीनों का हाईएस्ट स्कोर एक में है। मतलब एक कंट्री है जिसको ये वाला 7 मिलेगा, एक कंट्री है जिसको ये वाला 7 मिलेगा, एक कंट्री है जिसको ये वाला 6 मिलेगा। मतलब दिस इज गोइंग टू बी 3 डिफरेंट कंट्रीज, सेम कंट्री कैन नॉट हैव आइदर ऑफ द टू, 2 आउट ऑफ 3 और 3 आउट ऑफ 3। सो ये जो 3 नंबर्स हैं ये तीनों में अलग अलग जाएंगे। एस का 7 किसी और में जाएगा, एफ का 7 किसी और में जाएगा, और 6 का सी का 6 किसी और में जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक। अब जूमा का स्कोर 17 बनाना है। 17 कैसे बना सकते हैं? 17 तो बना सकते हैं 7 + 7 + 5, 7, सॉरी 7 + 7 + 3। अब 2 बार 7 तो आ नहीं सकता, तो ये तो नहीं बनेगा। तो 17 सम कैसे बनाएंगे? 6 + 6 + 5 बन सकता है। 7 + 6 + 4, क्या ये बन सकता है? ये भी बन सकता है। और कोई तरीका? 6 6 5 7 6 4, और कोई तरीका है 17 बनाने का? ठीक। तो इसका मतलब ये है 5 4 4 नहीं होता है बेटा, तो इसका मतलब 6 तो देना ही पड़ेगा। ये वाला 7,
ये वाला जो 6 है ये तो जाएगा ही जाएगा। तुम ये वाला 6, ये वाला 6 और ये वाला 5 लेके तुम 17 बना सकते हो। ये वाला 7, ये वाला 6 और ये वाला 4 मिला के बना सकते हो। ठीक है, 7 + 5 + 5, 7 + 5 + 5 भी 17 हो सकता है। रचित 8 हो नहीं सकता क्योंकि रेटिंग कहीं भी 8 तो है ही नहीं। 5 + 5 + 7 ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। तो 5 + 5 + 7 मतलब यहाँ पे 7 नहीं है तो यहाँ पे 5 5 है। यहाँ पे अगर 7 लोगे तो यहाँ 5 5 है नहीं क्योंकि यहाँ 5 नहीं है। यहाँ पे 7 लोगे तो इन दोनों में 5 नहीं है तो वो भी नहीं बन सकता। 6 6 5 भी बन सकता है तो 6 6 5 कैसे बनेगा? ये वाला 6, ये वाला 6, ये वाला 5। 7 6 4 कैसे बनेगा? ये वाला 7, ये वाला 6, ये वाला 4। तो दोनों केसेस में ये तो जा ही रहा है जुमा के पास, मतलब एस में रेटिंग 6 होनी ही चाहिए, अदरवाइज केस ही नहीं बन रहा। तो इसका मतलब जूमा का जो स्कोर होगा एस में वो 6 के अलावा कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड? यस और नो? स्तुति, आर वी क्लियर ऑन दिस? 6 6 5 का भी केस हो सकता है, 7 6 4 का भी केस हो सकता है। दोनों ही केस पॉसिबल है, लेकिन दोनों केसेस में जो 6 यूज होगा वो तुम्हारा एस कैटेगरी एस का ही हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों में से एक हाईएस्ट वैल्यू जो है 7 7 6 में से एक हाईएस्ट वैल्यू तो जूमा के पास जाएगी ही जाएगी। सो यू कैन आइदर गिव 7 और 6, बोथ आर। ठीक। Now, next one. B and D are categorized as happy and they had the same total score. What is the maximum total score they can have? तो अब मुझे दो वो हैं जिनका स्कोर सेम बनाना है। जूमा का स्कोर मुझे पता है 17 है, तो मैं एक काम करता हूँ, जूमा का एक केस बना लेता हूँ, उसके बाद मैं बाकी दो का सेम बनाऊँ। कोई भी एक केस बना लेता हूँ। ये बना लिया मैंने, एफ में बना लिया 7, यहाँ पे सी में बना लिया 5। ये वाला केस मैं जूमा का लेके बैठ रहा हूँ। ठीक, तो ये अपना फिक्स हो गया है जूमा। इसका तो स्कोर 17 है और बी और डी का स्कोर मुझे इक्वल करना है। ठीक, तो मैं बी के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे 7 दे देता हूँ। डी के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे 6 दे देता हूँ, क्योंकि तीन जो हैप्पी कंट्रीज हैं तीनों में एक एक कैटेगरी तो जा रही है। This is what I know and this is what I have given. Now score of B and score of D should be equal. अब क्या करें? ये तो जा चुका है, ये भी जा चुका है, ये भी जा चुका है और ये भी जा चुका है। ये 4 नंबर खत्म। अब क्या? जो ये वाला बंदा है इसके लिए बेस्ट पॉसिबल केस जो है, अच्छा जुमा का 6 क्या बनाया मैंने, 6 7 4 ही बना लेते हैं। ठीक है, 7 ले लिया तो 4 हो गया। अब इसका अगर 7 है, एन के वाई, एफ में 5 और यहाँ पे कितना 3, मैक्सिमम स्कोर तो इसका 15 ही बन रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। क्या ये बन सकता है? बन सकता है। तो इसका मतलब दोनों का अगर मैं स्कोर की बात करूं, कॉमन स्कोर और इक्वल स्कोर, क्या बन सकता है? दोनों का कॉमन और इक्वल स्कोर जो बन सकता है दैट इज गोइंग टू बी 15, सॉरी
अंडरस्टूड? क्योंकि मुझे इक्वल स्कोर बनाना है। मैं किसी एक का 16 तो बना सकता हूं, लेकिन उस केस में दोनों का स्कोर सेम नहीं बनेगा। मुझे दोनों का ही स्कोर सेम बनाना है। ये बात समझ में आई? देखो रचित, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जूमा के, मेरे पास दो पॉसिबल स्कोर थे, राइट? मेरे पास एक था 665 और एक था 674, यही था ना? मैंने ये वाला केस उठा लिया, यहां पे लिख लिया, ये वाले केस के हिसाब से अब सॉल्व कर रहे हैं। अब बी और डी दोनों हैप्पी हैं, तो मैंने यहाँ पे एस में बी को रेटिंग दे दी 7, ठीक है, ये वाली, और डी में सी को रेटिंग दे दी 6, ठीक, यहां तक अपन कर लिया। अब इसके बाद क्या है कि ये वाला 7 जा चुका है अपना, ठीक है, ये वाला 4 भी जा चुका है, क्योंकि ये वाला 4 तो मैंने यहां पे दे दिया। तो इसका मतलब इस कैटेगरी में सी में हाईएस्ट स्कोर अब मैं कितना दे सकता हूं? 3 ही दे सकता हूं। बी का एफ कैटेगरी में हाईएस्ट स्कोर कितना दे सकता हूं? 5 ही दे सकता हूं। तो हाईएस्ट स्कोर इसका बना ही कितना सकता हूं? मैं 15 ही बना सकता हूं, 15 से ऊपर तो बना ही नहीं सकता। हाँ है ना? डी का स्कोर मैं 16 बना सकता हूं। कैसे? यहाँ पे 6 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, 16 बन गया। लेकिन मुझे दोनों का स्कोर इक्वल रखना है, तो मुझे 6, 5 और 4 ही लेना पड़ेगा। अवनी, तुम 6, 6, 5 लेके भी कर सकते हो, लेकिन इवेंचुअली दोनों का स्कोर तो सेम ही आना चाहिए ना। तो वो भी तुम्हारा इवेंचुअली वही बनेगा। तुम अगर 6, 6, 5 लेके करोगे तो भी तुम्हारा 15 के अलावा केस नहीं बनेगा। दोनों का स्कोर 16 नहीं बन सकता। देखो, द क्वेश्चन इज, I can still make it as 655, but in that case the score is going to be 16. But why I am taking 4, 5, 6 is because this question says they got same total score. तो एक का स्कोर 15 और एक का स्कोर 16 नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो डायरेक्टली मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है। मींस बी का स्कोर जो है वो डी के स्कोर के बराबर होना चाहिए, और मैं दोनों का 16 नहीं बना सकता, इसलिए मुझे दोनों का स्कोर 15 ही बनाना पड़ेगा। If you want, you can try it with 665. You are still going to end up with the same case. Understood? Now the next one. बेंगा का स्कोर कितना है? 16 है। डेल्मा का स्कोर 15 है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज विद a स्कोर ऑफ 13? ठीक है, ठीक है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, आप उसको कैसे भी सॉल्व करो। आई एम गोइंग टू डू वन थिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक एन algebraic इक्वेशन एंड सॉल्व इट। ठीक है, algebraic इक्वेशन कैसे? अब नहीं, आई वोंट चेक द सेकेंड केस। 7 में मेरा टोटल स्कोर है 14, 7 प्लस 7। यहाँ पे टोटल रेटिंग है 6 प्लस 6 12। यहाँ पे कितना है? 5 इंटू 5 25। आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द सम ऑफ ऑल द रेटिंग्स। 3 प्लस 1 प्लस 5 दैट इज 20। यहाँ पे कितना है? 9 या 27। यहाँ पे कितना है? 4, 8। यहाँ पे कितना है? 3, 3। Can someone add up all the numbers quickly and tell me what is the sum? 30, 20, 50, 70, 80, 84, 30, 20, 50, 70, 84, 109। What is the summation of all the ratings? 109। ठीक, अब मुझे ये पता है कि दो कंट्रीज हैं जिनका स्कोर 7-7 है। एक का स्कोर क्या है?
17 है। एक का स्कोर क्या है? 16 है। एक का स्कोर क्या है? 15। बाकी 5 का स्कोर मुझे नहीं पता। तो कितना हो गया? 48। 48 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 62 प्लस 5 कंट्रीज का जो भी सम है दैट इज इक्वल टू 109। तो 5 कंट्रीज का सम कितना बनता है? दैट इज गोइंग टू बी 45। ठीक है, 5 कंट्रीज का सम, और कंडीशन ये है कि किसी भी कंट्री का स्कोर 8 से कम हो ही नहीं सकता, बिकॉज लोएस्ट स्कोर इज 7। सो एवरी कंट्री नीड्स टू हैव एटलीस्ट स्कोर ऑफ वो। मैं सारी को 8 8 दे देता हूँ। कितना चला गया? 40। एडिशनल कितना बचा? 5। अब मैं किसी एक में 5 ऐड कर दूं तो एक कंट्री का स्कोर 13 हो सकता है, राइट? और एक से ज्यादा कंट्रीज का स्कोर 13 नहीं हो सकता, क्योंकि समेशन में एडिशनल वैल्यू ही नहीं बची। अंडरस्टूड? एक मिनट। हाँ, समझ आया नहीं आया? एनी डाउट? So the maximum number of countries that can have a score of 13, there is going to be only one country, not more than that. क्योंकि okay, now let's take it at this way. 5 countries हैं, उन सबका सम कितना है? 45। ठीक है, उनका स्कोर है 45, लोएस्ट स्कोर 7 है। इसका मतलब बाकी सबका स्कोर 8 तो है ही। तो मैं सबको 8 8 दे के शुरुआत कर रहा हूं, सबको मैंने 8 का स्कोर दे दिया, मतलब 40 में दे चुका हूं। एडिशनल कितना बचा? 5। अब जो एडिशनल 5 बचा है वो मैं 5 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से करूंगा वो मैं देखूंगा। अगर 5 का 5 में एक ही कंट्री को दे दूं तो मेरा सम बन जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 13, एंड दैट इज इक्वल टू 45। इज इट ट्रू? यस। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज कैन हैव अ स्कोर ऑफ 13? 1। अंडरस्टूड? यस? नो? Okay, now this one. Shivam, do you know, when I started this set, I told you that this is a set of happiness index that has taken away the happiness of everyone who has attempted it. Akhar, I'll tell, you know, what do I recommend? I recommend that attempt the set that you can solve. In the exam, I'm very sure that you won't be able to solve. And you know, the thing is, I like these kind of sets because these kind of sets give me clarity in 2 minutes that nahi hoga mujhse. These kind of sets I like a lot. I consider these kind of sets are very easy sets
Because how do I bifurcate between an easy set and a difficult set? Easy set for me is a set that tells me in 2.5 minutes that I should attempt that set or not. So, in my opinion, previous set was an easy set because in 2 minutes it is going to tell me mat kar, mat kar. Fine. So I won't solve it. So it's the problem I face. I consider the sets that are difficult because take a lot of time, and still they don't give you any information कि आगे करना है कि नहीं करना. This one. So what is the first thing we are going to do in this set? Questions. Very nice, Stuti. Questions. This one. Now, after reading the questions, would you attempt? Would you not? हर एक क्वेश्चन अलग केस है. ठीक है. तो क्या करें? देख लो. मतलब नहीं करना चाहिए. ठीक है स्तुति. Now let's try to solve this one and let's see whether your conclusion is right or wrong. So basically everyone got a mindset, right? You should not be attempting this set. ठीक है. अब इस सेट को करते हैं and see whether your conclusion that you have drawn is right or wrong. ठीक है. जल्दी से ट्राई करते हैं इसको. ठीक. So now what we are going to do, we are going to look at every set before attempting कि ये करना चाहिए या छोड़ना चाहिए during the exam. ठीक. उसके बाद सॉल्व करके देखते हैं क्या ये तुम्हारा जजमेंट ठीक है या गलत. ठीक. प्रीवियस वाले में डेफिनेट था कि नहीं करना. इसमें तुम्हारा जजमेंट है नहीं करना चाहिए. अब सॉल्व करके देखते हैं कि क्या करना चाहिए था. चलो. So what is the information that is given? Nothing. बैंक डिपॉजिट कितना है? 70 लाख. ठीक है. एक हाउस है वो कितने का है? 50 लाख. फ्लैट्स हैं 3 फ्लैट्स हैं. टोटल नेटवर्थ कितनी है? 13 to 3. सर्टेन नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कितने हैं? n into 1. ईच वर्थ 1 लाख. इसका मतलब n गोल्ड कॉइन्स है, सबकी वर्थ 1 लाख है. सो टोटल n lakhs. ठीक है. She wants to distribute her assets among 3 children, नीता, सीता and गीता. Houses और मतलब जो चीज है वो पूरी एक की एक जा रही है. केवल बैंक डिपॉजिट है जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है.
ठीक है, 1 फ्लैट एक को गया, एक, ठीक है, मतलब अब एक बात बताओ, कैन यू कंक्लूड दैट एवरीवन इज गेटिंग सेम अमाउंट ऑफ वर्थ, ऑल 3 चिल्ड्रन, कि जितना टोटल नेटवर्थ नीता को मिला उतना ही सीता को मिला, उतना ही गीता को मिला? क्या तुम कंक्लूड कर सकते हो इसको? न कर सकते हैं, न करना है। ठीक है, बस इतना इंफॉर्मेशन गिवन है, इतना ही है। अब यहां पे ठीक, अब क्वेश्चन, बैंक डिपॉजिट 70, हाउस 50, फ्लैट 13 to 3 एंड गोल्ड कॉइन्स n into 1, ये अपन को पता है, इसके अलावा कोई काम की चीज नहीं है। देखो फर्स्ट 2 में केस सेम है, देखो फर्स्ट और सेकंड मुझे लगता है तुरंत हो जाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सीधे सीधे ये बोल दिया है कि the value of assets distributed equally among the children as per the gold coins, so gold coins भी सबको इक्वल मिली है, so गोल्ड कॉइन का तो सेंस ही नहीं है। ठीक है, हटाओ, तो टोटल वर्थ कितनी है? 70 प्लस 50, 140, 140 प्लस 90, अच्छा 70, 120, 120 प्लस 90, 210, राइट। तो इसका मतलब, शुभम एक मिनट, तो इसका मतलब सबको 70 लाख, 70 लाख और 70 लाख मिल रहा है। ठीक है, पहला वाला 70 लाख है, नीता को लीस्ट अमाउंट इन बैंक डिपॉजिट में। ठीक है, अब मेरे पास जो है, नीता को लीस्ट अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट मिला, नीता, गीता और सीता। ठीक है, अब सबको 70 लाख नेटवर्थ देनी है, तो अब 3 फ्लैट, तीनों में एक एक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जिसको हाउस मिलेगा और उसको अगर फ्लैट भी मिल गया तो उसको 80 लाख मिल रहा है, जो पॉसिबल नहीं। ठीक है, सो एक को तो हाउस मिला, पूरा का पूरा हाउस मिला। ठीक, प्लस उसको 20 लाख बैंक डिपॉजिट मिला। ठीक है, दूसरा है जिसको 2 फ्लैट मिले, 2 फ्लैट का मतलब 60 लाख, प्लस 10 लाख बैंक डिपॉजिट मिला होगा। तीसरी जो है उसको एक फ्लैट मिला होगा 30 लाख, और 40 लाख बैंक डिपॉजिट मिला होगा। तो नीता को लीस्ट अमाउंट ऑफ कैश मिला, लीस्ट अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट, सो दिस शुड बी नीता। गीता को हाईएस्ट मिला, सो गीता को ये हो गया, हाईएस्ट डिपॉजिट मिला, सो ये कौन हो गई? सीता। तो सीता को बैंक डिपॉजिट में कितना मिला? 20 लाख। नाउ शुभम, आई कम टू क्वेरी, टू योर क्वेरी, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि बैंक डिपॉजिट स्प्लिट नहीं होगा। हाउस एक को जाएगा, एक फ्लैट एक को जाएगा, और एक कॉइन एक को जाएगी, लेकिन बैंक डिपॉजिट तो स्प्लिट हो सकता है ना, उसमें लिखा हुआ है पूरा। बैंक डिपॉजिट के बारे में कहां लिखा है उसमें? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इट सेज
हाउस जिसको गया, हाउस जिसको गया वो 50 लाख उसको मिला, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन अलग है, सेम कंडीशन ये है, नीता को कितने फ्लैट मिले? सो नीता को 2 फ्लैट मिले। सेम अरेंजमेंट में ये पहला दूसरा क्वेश्चन तो क्लियरली विजिबल, कोई इशू ही नहीं है। गॉट इट? शुभम बस ये इतना कहना चाहता है कि जो एक फ्लैट है वो एक को जा रहा है। देखो, मैंने सबको इक्वल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स मिल रहे हैं तो मैंने गोल्ड कॉइन को इक्वेशन से ही हटा दिया, ठीक है रचित? तो टोटल नेटवर्थ हो गई 210, 2 करोड़ 10 लाख। तो तीनों को इक्वल मिल रहा है, तो तीनों को 70 70 70 मिल रहा है। आर वी क्लियर रचित? ठीक है। तो जिसको घर मिलेगा 50 लाख, घर तो 50 लाख का है, टोटल मिल रहा है 70 लाख, तो 20 लाख रुपए बैंक डिपॉजिट से मिलेगा। एक को 2 फ्लैट मिल रहे हैं, तो 2 फ्लैट मिल रहे हैं मतलब 60 लाख मिल रहा है, तो 10 लाख बैंक डिपॉजिट से मिलेगा। तो एक घर चला गया, 2 फ्लैट चले गए, तो एक फ्लैट बचा, तो एक फ्लैट 30 लाख का मिल रहा है, तो 40 लाख बैंक डिपॉजिट से मिलेगा। अंडरस्टूड? अब यहां पे ये इन तीनों में से कौन सा अरेंजमेंट किसके पास जाएगा वो मैंने क्वेश्चन से फिगर आउट किया। नीता को बैंक डिपॉजिट में लीस्ट मिला, तो इसका मतलब नीता ये वाली होनी चाहिए। गीता को बैंक डिपॉजिट में हाईएस्ट मिला, तो गीता ये वाली होनी चाहिए। तो सीता ये वाली होनी चाहिए। वो मैंने बाद में डिसाइड किया कि कौन कौन होगी, पहले मैंने अरेंजमेंट बनाया। अंडरस्टूड? नाउ अच्छा, ये क्लियर है ना सबको, ये वाला कैसे किया पहले दोनों? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट टू क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करेंगे हम। सो इट सेज द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नीता सीता एंड गीता, एसेट्स टोटल 1:2:3 के रेशियो में डिवाइड। ठीक, गोल्ड कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए 2:3:4 के रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड कॉइन का सम कितना है? 9। यहाँ पे टोटल एसेट का सम कितना है? दैट इज आई वुड से कितना है ये? 6। 9 और 6 का एलसीएम क्या है? 9 और 6 का एलसीएम क्या है? 18। सो आई एम गोइंग टू कंसीडर देयर आर 18 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। 18 और 18n गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, 18n लेके चलते हैं, ठीक है। सो जो टोटल नेटवर्थ है इसकी वो 210 प्लस 18n है। 210 प्लस 18n दैट इज द टोटल नेटवर्थ वी गॉट, ठीक। पहले वाले को 1/6 मिला, 1/6 इसका कितना होगा? 210 का 1/6 कितना होता है? 35 प्लस कितना आएगा? 3n, ठीक है। दूसरी वाली को 1/3 मिला, 1/3 कितना आएगा? 70 प्लस 6n, ठीक है। तीसरी वाली को कितना मिला? 105 प्लस 9n, ठीक है। ये टोटल नेटवर्थ मिली, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स जो मिले वो कितने मिले? 2:3:4। 18 को मैं 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 4, 6 और 9। तो इसको तो 6 गोल्ड कॉइन मिले ही मिले, इसको 4 गोल्ड कॉइन मिले, इसको सॉरी इट शुड बी 8, 8 गोल्ड कॉइन, ठीक है। अब क्या कह रहा है? वन चाइल्ड
और एक बच्चा है जिसको तीनों फ्लैट मिले और उसको घर नहीं मिला, ठीक है। वन चाइल्ड अदर देन गीता गॉट 30 lakhs in the bank deposit. How many gold coins did that woman have? That's the question. ठीक है, ये टोटल नेटवर्थ जो है वो दी गई है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बाकी अपना पैसा वैसा है उसका हिसाब हमको देखना है, ठीक है। पूरे का पूरे 3 फ्लैट एक ही लड़की को गए, कितना गया? तीनों का तीनों वो जो फ्लैट है वो एक ही लड़की को गए हैं। कौन सी लड़की हो सकती है? वो यही वाली लड़की हो सकती है। उसको 90 लाख तो फ्लैट मिले प्लस बैंक डिपॉजिट भी कुछ मिला होगा। असेट तो गोल्ड कॉइन में भी है, वही तो मैं ले रहा हूं कि 105 प्लस 9 है, ठीक है। 90 लाख तो 3 फ्लैट के हो गए। इसको तो ना हाउस मिल सकता है ना फ्लैट मिल सकता है, इस ये तीनों फ्लैट लायक है नहीं। इसको हाउस मिल नहीं सकता क्योंकि इसकी ये 35 प्लस 3 है। तो इसका मतलब इसको तो कैश कैश मिला होगा। हाउस किसको मिला होगा? इसको, ठीक है। एक को 30 लाख का डिपॉजिट मिला, एक को 30 लाख का डिपॉजिट किसको मिल सकता है? वो इसी को मिल सकता है। तो इसका मतलब 35 प्लस 30n शुड बी इक्वल टू 40, सॉरी 30 प्लस 4n। तो n comes out to be 5, so total number of coins comes out to be 90। और यहां से अपना आंसर आ गया। एसेट में तो सब इंक्लूड, ठीक है। अब यहां पे 6n है, 6n है, इसका मतलब यहां पे 20 लाख रुपए कैश मिला। 50, देखो 6n नेटवर्थ का है, 6n गोल्ड कॉइन है, 50 लाख का एक घर मिला होगा, 20 लाख कैश मिला होगा, सेट हो गया। 30 लाख कैश इसके पास, 20 लाख कैश इसके पास, तो इसको 20 लाख मिला होगा। सो 90 लाख के 3 फ्लैट, 20 लाख का घर प्लस 8 है वो, और वैल्यू मैच करा लो तो 109 प्लस 105 प्लस 9 इनके बराबर बैठे। 105 प्लस 9n का मतलब 150, 90 प्लस 20 प्लस 40, 150, सेट हो गया। अब बताओ, अब दूसरा ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गीता को बैंक डिपॉजिट में क्या मिला। ना यहाँ पे ये बोल रहा है वन चाइल्ड अदर देन गीता, उसको 30 मिला। तो इसका मतलब ये 30 लाख वाली गीता तो है नहीं, तो गीता या तो ये होगी या ये होगी, और दोनों केसेस में बैंक डिपॉजिट 20 मिला, ठीक है। देखो, अच्छा ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैं इसको टेबल बना, सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, इसको वापस से देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं। नेटवर्थ, ठीक है, हाउस, फ्लैट, बैंक डिपॉजिट एंड योर गोल्ड कॉइन्स, ठीक। पहले वाले की नेटवर्थ क्या है? 35 प्लस 3 है। अब इसका हिसाब लगाना है। दूसरे वाले की नेटवर्थ क्या है? 70 प्लस 6 है, ठीक है। तीसरे वाले की नेटवर्थ क्या है? 105 प्लस 9 है, ठीक है। अब 3 फ्लैट एक ही को मिल रहे हैं, तो 3 फ्लैट एक ही को किसको मिल सकते हैं? इसको। तो 90 लाख तो हो गया, ठीक है। इसको गोल्ड कॉइन कितने मिले? 4 है। इसको गोल्ड कॉइन कितने मिले? 6n। इसको गोल्ड कॉइन कितने मिले?
6 4 10 8 है, ठीक है। इसको 6n मिल रहा है, 6n मिल रहा है, इसलिए 70 लाख मिल रहा है, तो 70 लाख इसको हाउस, फ्लैट और बैंक डिपॉजिट से मिल रहा होगा, ठीक है। ये 3 के 3 फ्लैट लायक है नहीं, क्योंकि ये तो 90 से कम है, तो इसका मतलब इसको एक हाउस मिला होगा, फ्लैट 0, बैंक डिपॉजिट कितना 20, ठीक। अब गीता के अलावा एक को 30 लाख का बैंक डिपॉजिट मिला, अब इसको जो मिल रहा है पूरा तो पूरा बैंक डिपॉजिट मिल रहा है या गोल्ड कॉइन मिल रहा है, तो बैंक डिपॉजिट कितना मिला होगा 30, 30 प्लस 4n शुड बी इक्वल टू 35 प्लस 30 है ना, तो 30 प्लस 4n इज इक्वल टू 35 प्लस 3n, सो n कम्स आउट टू बी 5। समझ आ गया? शुभम, आर बी क्लियर ना? यस, नो? नेटवर्थ को 1:2:3 के रेशियो में लिया, गोल्ड कॉइन्स को 2:4 के रेशियो में लिया, एंड सॉल्व अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है। अब वन चाइल्ड अदर देन गीता गॉट 30, इसका मतलब जो पहली वाली लड़की है वो गीता नहीं है, मतलब ये वाली लड़की गीता नहीं है। अब गीता इन दोनों में से कोई भी हो, दोनों को मिल सेम अमाउंट रहा है, मतलब 20 लाख ही मिलेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, पहला वाला था करने लायक, बाकी दो नहीं थे, चलो ठीक है। ये वाला करते हैं, ये वाला आसान लगता है मुझे। ये क्वेश्चन है, सेकेंड हाईएस्ट रेटिंग, स्तुति नेटवर्थ कैलकुलेट कर। शुभम, नंबर ऑफ सेट से फर्क नहीं पड़ रहा, 4 बजे वाइंड अप कर लेंगे हम। स्तुति पुट n इक्वल टू 5, so put n equal to 5, so 105 plus 45, this value comes out to be 150, right? 90 plus 20 plus 40, is it equal to 150? और तुम ये भी तो देखो, यहाँ पे 9n है, यहाँ पे 8n है, n का भी तो डिफरेंस है। गॉट इट? क्वेश्चन पढ़ लिए इसके? क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ओके, ओके, ओके आकर, दैट्स आई थिंक दैट्स अ गुड थॉट। लेकिन आकर आई टेल यू वन थिंग, कि अगर पिछला वाला सेट भी ट्राई करोगे ना, तो 4-5 मिनट में पहले दो क्वेश्चन तो हो जाएंगे आराम से। The only struggle you are going to have in the last two questions, not first two questions are not even tricky.
Yeah, that's good thought. Just give me 2 minutes. I'll be back.
हो गया। अच्छा, ये सबको पता है कि टेबल बनेगी। अब जब भी हम टेबल बनाते हैं तो टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसका पहला कॉलम। पहला कॉलम क्या होना चाहिए? टेबल में पहला कॉलम क्या? पहला कॉलम होगा कप नंबर, क्योंकि नंबर कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। सो कप नंबर जो चीज कांस्टेंट होती है, जो चेंज नहीं होता, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिल्डिंग एंड फ्लोर्स, सो फ्लोर कांस्टेंट है। फर्स्ट के बाद सेकंड फ्लोर ही आएगा, सेकंड के बाद थर्ड फ्लोर आएगा, थर्ड के बाद फोर्थ फ्लोर आएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कप नंबर। देन वी आर टॉकिंग अबाउट रेटिंग। अब उसके अलावा तुम किसी भी ऑर्डर में डाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेटिंग और सिटी को इंटरचेंज भी कर लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नाउ वी गॉट दिस 1 2 3 4 5 6। और रेटिंग कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेके 10 तक जा रही है। ठीक है। अब यहां पे स्टेटमेंट ये है, मैं सारे 1 से लेके 10 तक नंबर ले लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 10 में से तुम्हें 6 नंबर चाहिए, क्योंकि 6 कप है तो 6 रेटिंग हो सकती है। ठीक है। अब बात ये है कि 10 में से, अब यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या होगा कि 10 में से या तो तुम्हें 4 नंबर रिजेक्ट करने या 6 नंबर सिलेक्ट करने। ठीक। सो दोनों में से आपको दोनों थॉट प्रोसेस साइमल्टेनियसली लेके चलने हैं कि यू नीड टू रिजेक्ट एज वेल एज यू नीड टू एक्सेप्ट बोथ थिंग्स। पहला स्टेटमेंट एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है जो ये बोल रहा है कि ये सीधे सीधे हिमाचल से। ठीक है। ये सिटी की जगह स्टेट ले लेते हैं। ठीक है। तो बी सिटी ही ले लेते हैं। ठीक है। कब फ्रॉम ऊटी गॉट द हाईएस्ट रेटिंग? ठीक है। तो ऊटी पे हाईएस्ट रेटिंग है। हाईएस्ट रेटिंग का मतलब क्या 10 है? पता नहीं, लेकिन 6 या 6 से ज्यादा है। रेटिंग्स हो सकता है 1 2 3 4 5 6 हो। तो ऊटी की जो रेटिंग होगी वो 6 या 6 से ज्यादा होगी, लेकिन वो 6 नहीं है, वो कप नंबर 3 नहीं है, ये अपना ऊटी नहीं हो सकता। ठीक। रेटिंग ऑफ कप 3 वाज डबल दैट ऑफ रेटिंग कप 5। ठीक है। तो अगर इसकी रेटिंग ए है तो सॉरी, अगर इसकी रेटिंग ए है तो इसकी रेटिंग 2 ए है। ठीक। ओनली 2 कप्स गॉट रेटिंग इन इवन नंबर। सो मतलब 2 4 6 8 10 में से 2 ही हैं जो 2 वैल्यू आई। कप 3 गॉट हायर रेटिंग देन कप 1। ठीक है। सो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये इससे कम होगी। ठीक। कप 2 गॉट मिनिमम रेटिंग एंड इट वाज इवन नंबर। इसकी इवन रेटिंग है। ठीक है। ये ए है, ये 2 ए है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कप 3 में इवन रेटिंग आई होगी? 2 ए तो इवन ही होगा, राइट? कप 2 में भी इवन आया, राइट? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ए तो ऑड ही हो सकता है, राइट? यहां तक हम क्लियर है? ए इवन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 इवन नंबर चाहिए। एक तो ये इवन नंबर होगा ही होगा, एक ये इवन नंबर होगा ही होगा। इसका मतलब और कोई इवन नंबर होना पॉसिबल नहीं है। ठीक। मुझे 6 नंबर चाहिए, 6 में से 2 नंबर इवन है, तो इसका मतलब 4 नंबर और होने चाहिए। इतना पता है मुझे। ठीक। अगर ये 1 है तो ये लोएस्ट हो गया, हो नहीं सकता। अगर ये 3 है तो ये 6 है, ये हो सकता है। अगर ये 5 है तो ये 10 है, जो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 10 होगा तो ये ऊटी हो जाएगा, क्योंकि ऊटी की हाईएस्ट रेटिंग है।
तो इसका मतलब ये 1 नहीं हो सकता, ये 5 नहीं हो सकता, 5 से ज्यादा तो इसको भी नहीं है, तो इसका मतलब इसकी रेटिंग आ गई, ये 3 है, ये 6 है, और इसकी लोएस्ट है और इवन है, तो इसका मतलब ये 2 है। मतलब 1 किसी भी कप की रेटिंग हो ही नहीं सकती। तो ये 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 3 नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे कितने ऑड नंबर चाहिए? 4 ऑड नंबर। तो 3 आएगा ही आएगा, 5 आएगा ही आएगा, 7 आएगा ही आएगा, 9 आएगा ही आएगा। इसका मतलब ऑड रेटिंग्स तो मेरे पास आ चुकी हैं, इवन रेटिंग्स भी आ चुकी हैं। 2 6 मतलब 4 कहीं नहीं होगा, 8 कहीं नहीं होगा, और 10 भी कहीं नहीं। तो जो 6 नंबर मुझे चाहिए वो 6 नंबर मुझे मिल गए। तो ऊटी की हाईएस्ट रेटिंग होनी चाहिए 9। 9 कहाँ पे जाएगी? वो इन दोनों में नहीं हो सकती, इन दोनों में नहीं हो सकती, देखेंगे अभी। और क्या कह रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कब 3 गॉट हायर रेटिंग देन कप 1? ठीक। सो मेरे पास 2 यूज हो गया, 3 यूज हो गया, 6 यूज हो गया। सो 2 चला गया, 3 चला गया, 6 चला गया, और इसकी रेटिंग इससे ज्यादा है, इसका मतलब इसकी रेटिंग 5 ही हो सकती है। मतलब 5 भी चला गया, मतलब 9 और ऊटी का एक ही स्कोप बचता है, दैट इज दिस एंड दिस। तो यहां पे एक ही रेटिंग बचती है, वो बची 7। दैट्स इट, रेटिंग्स आर सेट। किसी को कोई डाउट? Wayanad is greater than Munnar and less than Assam. Okay. डाउट नहीं है या समझ में नहीं आया? आई एम सॉरी। ओके, ठीक। अब मुझे लास्ट पॉइंट से ये इंफॉर्मेशन मिली कि मुन्नार, वायनाड और असम ये 3 हैं, लेकिन मेरे पास प्लेस 4 खाली है। 1 2 3 4। ठीक है। अब इसमें से एक और सिटी है जिसका नाम मुझे नहीं पता, वो है दार्जिलिंग। तो और दार्जिलिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो बचा दार्जिलिंग। ठीक। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन, सेकेंड हाईएस्ट रेटिंग जो गिवन है वो कौन सी है? सेकेंड हाईएस्ट रेटिंग कौन सी हो सकती है? व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? दैट इज 7। गॉट द आंसर। ओके। व्हाट इज द कप नंबर ऑफ ऊटी? कप नंबर ऑफ ऊटी इज 4। दैट आल्सो वी गॉट। ठीक। 2 क्वेश्चन तो हो गए। मुन्नार की अगर मिनिमम रेटिंग नहीं है तो वायनाड की क्या है? तो अपने पास अभी जो रेटिंग्स अनसेटल्ड हैं वो है 2 3, सॉरी 2 3 5 और 7। सॉरी 2 3 5 और 6। अगर मुन्नार ये नहीं है तो मुन्नार बस यही होगा, वायनाड यही होगा, असम यही होगा, और ये दार्जिलिंग हो जाएगा। केस ही नहीं बन सकता। वायनाड मुन्नार से ज्यादा है और असम वायनाड से ज्यादा है, तो इसका मतलब वायनाड वाले की रेटिंग क्या होनी चाहिए? दैट मस्ट बी 5। वी गॉट द आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 4। वायनाड और ऊटी का जो कप है वो कंसेक्यूटिव है। ठीक। वायनाड और ऊटी का कप कंसेक्यूटिव है। ठीक है। तो क्या है? तो अरेंजमेंट बना लेते हैं। देखो, क्या वायनाड की रेटिंग 3 हो सकती है? क्या वायनाड की रेटिंग ये हो सकती है? अगर मैं मुन्नार को 2 दे दूं तो वायनाड 3 हो सकता है।
ठीक है, क्या वायनाड की रेटिंग 6 हो सकती है? अगर वायनाड की रेटिंग 6 है तो असम की रेटिंग तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 6 से बड़ा कोई नंबर है नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब ऊटी और वायनाड कंसेक्यूटिव हैं, इसका मतलब ये वायनाड होगा। 2 वाला कब जो होगा वो अपना डेफिनेटली मुन्नार होगा। बाकी दो मुझे अभी भी नहीं पता कि दार्जिलिंग और असम में से कौन सा होगा। सो असम और दार्जिलिंग में से कोई भी हो सकता है। सो अगला देख लेते हैं। कब 5 इज फ्रॉम असम, कब 5 इज फ्रॉम असम, दैट्स फॉल्स। कब 1 इज फ्रॉम दार्जिलिंग, दैट मे बी ट्रू, ये हो सकता है। एंड क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट मे बी ट्रू। वायनाड गॉट रेटिंग 6, ये तो पक्का ही गलत है। दार्जिलिंग गॉट मिनिमम रेटिंग, ये भी पक्का ही गलत है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा, दैट इज दैट मे बी ट्रू एंड रिमेनिंग 3 आर डेफिनेटली। अंडरस्टूड? गारंटी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है। पहला वाला डेफिनेटली रॉन्ग है, तीसरा वाला डेफिनेटली रॉन्ग है, चौथा वाला डेफिनेटली। क्लियर? ओके, नाउ वाज इट अ डिफिकल्ट सेट? Oh, is it? It was easy to moderate, I would say. ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अपन करते हैं, इसके पहले अपन ये वाला। अमुदा, भरतन, चंद्रन, दिनेश, एजिल, फनी। तो बेसिकली ABCDEFG 7 लोग। अब बताओ, क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेक अ कॉल, मेक अ जजमेंट वेदर यू नीड टू डू इट और यू शुडंट डू इट। ओके रजत, ओके शुभांग, ओके स्तुति। ठीक है, नाउ स्टार्ट। So basically, at this point of time, I would say we are not solving the sets. We are just honing the analytical skills that whether you should pick, you shouldn't, and see after the solution whether your judgment was right or wrong. ठीक है देवांशी। Devanshi, let me tell you one thing. Definite solution doesn't mean you should go for it all the time. A lot of times, definite solutions become a lot trickier.
Okay, Rachit.
Just give me a moment. Should we start? Okay. In my opinion, it is a difficult side. So it's not that easy that it looks like an easy one. It's not. So try to understand what is the logic behind it. There are 7 people, right? A, B, C, D, E, F, G. Okay. And among the people, you have relations. 3 kind of relations. One is friend, one is acquaintance, one is a stranger, right? Can you have any kind of relation with yourself? Either friend or a stranger or acquaintance? Yes or no? Can you have? Okay. So if you can't have any kind of relation with yourself, it simply means that everyone is going to have 6 relations. Is it or is it not? Everyone is going to have how many relations? 6 relations. Fine. Means number of friends plus strangers plus acquaintance are going to be 6. This is what we are having. Now, so I am going to make a table accordingly. One is, and that table is going to be simply like this. That I'm going to make it as this. That is going to be A, B, C, D, E, F, and G. A, B, C, D, E, F, and G. So I know that everyone has 6 relations. So if everyone has 6 relations, that I can I fill the previous table? I can fill couple of points, right? For example, 4 plus 1, 5. This should be 6. 3 plus 2, 5. 1, 6. Now this is 1. So there are some values. There are 2, some values. There is 1, some values. This is I don't know. And I am going like this. Tick cross, tick cross, tick cross. For 6 people. Okay. Amuda, Bharatan, and Chandran are mutual strangers. So Amuda, Bharatan are strangers. Amuda, Chandran are strangers.
Bhartan, Amuda are strangers. Bhartan, Chandran are strangers. Chandran, Amuda and Bhartan. This is the relation I got. Okay. Amuda is the stranger with 4 people. Okay. Amuda, Dinesh and Funny are Azil's friend. So Amuda, Azil and Amuda is friend of Azil. So this is friend. Dinesh is also a friend. Funny is also a friend. So this is a friend. This D and E are friends and F and E are friends. Okay. So this statement is used. Sorry, this is used. This is also used. C and D are friends. C and G are friends. C and G are friends. G and C are friends. Okay. Are we clear till this point? Yes or no? Didn't conclude anything so far. Everyone is clear till this point? Okay. Now the last 2 points are simply telling me any friend of A is, so A and B, we got this kind of relation. If friend is here, then it must be acquaintance. If acquaintance is here, then it must be friend. Either I follow this thing or I follow this thing. Is it or is it not? A and D are friends. Where it is written? Amuda, Dinesh and Funny are Azil's friend. It doesn't mean Amuda and Dinesh are friends. Does it? Rachit, you are friend of X, you are friend of Y. Can you conclude that X and Y are friends? Got it? So that's the same thing. Amuda, Dinesh, and Funny are Azil's friend. A, D, F are E's friend. That doesn't mean A and D has to be friend. That doesn't mean A and F has to be friends. They may be. I'm not saying they won't be. They may be. So now I am going to come to this statement. Now, how many friends Amuda has? 1. Okay. Amuda got 1 friend. Right. How many friends Funny has? 1. Already settled. No other friend Funny can have. How many friends Gautam has? 1. Got it. Okay. Now, can Amuda and Gautam be friends? Can Amuda and Gautam be friends? Yes or no? If I look for A and G, can these two be friends? They can't be. If this is friend, then Gautam is going to get 2 friends. Right. Are we clear on this? Can these two be acquaintance? Can Amuda and Gautam be acquaintance? Yes or no? Amuda and God, I'm not saying they will be, I'm saying can be. No, Stuti, no. Because if this is acquaintance, then it should be friend. Because a acquaintance of A is a friend of B. So if this is A, then it should be F. If this is F, then Gautam is going to get 2 friends. Is it a possibility now? So Amuda and Gautam both can't be friends, both can't be acquaintance. So it means what should be both? They should be strangers. So the only relation between Amuda and Gautam that can be strangers. Are we clear on this? The only possible arrangement I got. Understood? Now, if I look at F, A and F, can I apply the same logic? Funny also got 1 friend. So can I apply the same logic here? So these two has to be friends only, strangers only. Because if this is F, not possible because Funny has only 1 friend. If this is acquaintance, then it has to be friends.
Again, not possible. So it means this also has to be strangers. If this is F, this must be A. How many strangers I need for Amuda? 4. I got 1, 2, 3, 4. How many friends do I need? I got 1, and there is 1. How many acquaintances? A, 1. So that is A, that is F. Anyone has any doubt so far? Yes or no? All clear so far? Okay. Now let's move on to the next step. Okay. So this I have sorted. Now Gautam got one friend. Okay. Gautam got two strangers. Two strangers. So remaining three people has to be acquaintance. So remaining three people are what? Acquaintance. That's it. Understood? Any doubt so far? Okay. Okay. Now Dinesh got how many strangers? Two. How many places are vacant for Dinesh? Two. So it means the remaining two people has to be acquaintance. Sorry, strangers. Because there are two strangers left out, two places are vacant, so both of them has to be strangers. So D is also filled. Got it? How many strangers E has? One. So that is S. That is only one place left out at E. So that is S. That is S. That is also filled. How many acquaintances C has? One. And there is only one place vacant in C. So that has to be acquaintance. Is my table completed? Yes. Got it? Yes? No? Okay. Now do you think it's difficult? Avni, I think it is 22, 23 set. I think it's 22 set. It's easy one or a difficult one? Stuti, that's the problem with LR. You don't get it's it's not easy to pass through the break point. That's what makes it difficult. Got it. So first break point is you need to understand what kind of table you are supposed to make. If you are going to try to fill the table in this only, this table, if you are going to try to fill this table, it's not going to be easy. You can't fill up this table. I didn't fill this table. I just got one this number, one this number. Apart from this, I don't think I can fill up the everything without making this kind of table. So whenever I get this kind of set, when there is either games and tournaments or relation between people and people, I always go with this table, tick and cross table. And that helps me a lot. And this is not a common table. This is not a rare table that I make. This is a very regular one. Got it? Okay. So now I think I got three sets left. One is this one. Second is this one. And last is this one. Pick one set, I'll solve that.
because I don't think I have enough time to solve all three. And Stuti, I'm very much sure that it won't click easily. So whichever set you say, I'll pick that set. Rachit is saying petrol station. Okay. Anyone else? Or I can do any of those. Okay. This one. So let's start this one. Is it a case study? Must be true. Okay, so all four are independent questions over here.
Okay. Okay. Should we start? Okay. Tell me one thing. At least two questions are done. Okay, Rachit. That's good. That's good. Okay, Abhini. That's good. So if at least two questions are done in this much time, then I think you are doing great. Now, very nice, Stuti. Very nice. Very nice. Contamination level is either low, high, or medium. Fine. Contamination level at three pumps from P1 to P5 was recorded as high. So I know it is first one has to be high, third one has to be high, and fifth one has to be high because no other case is going to have. No, actually, there can be three consecutive cases. Okay. So I made a mistake on the first line. Okay, doesn't make a difference. P6 is the only pump among P1 and P10 where contamination was low. So 6 is low. From 1 to 10, there is no other low. P7 and P8 are two consecutive numbers that has same level of contamination. It means in 7 and 8 are same, and apart from that, no other had the same contamination level, no consecutive ones. So what I did was right. So high, high, and high. Okay. And from 1 to 10, there is going to be only one low that is here. So it means this should be medium, this should be medium. This is what I call. High contamination was not recorded from any from P16 to P20. So basically, everything is going to be either low or medium. And what is it? I don't know. Okay. The number of pumps where high contamination level was recorded was twice the number of pumps where low contamination was recorded. Okay. So high should be twice of low. Okay. Now I'm a little dicey. And why dicey? Because in last five, there should be at least two lows. There is one low here. So highs should be at least six. Lows can be at least three. Okay. It means mediums should be at least 11.
Medium should be 11 because sum of all those things should be what? So low, high, and medium, sum should be 20. Okay. 4, 8, and 8. That looks a reasonable number. That this is, there are 4 lows, 8 highs, 8 mediums, 5, 10, and 5. That also looks good number. 6, 12, and 2. That doesn't look a very good number because that's not a possible arrangement, right? Because 12 high and in last 5 there are no highs, so basically this is not a possible arrangement. 10 highs is also not a possible arrangement because 10 highs means from start to end everything is alternate, right? That's not a possible arrangement. So the only possible arrangement I can get is 8, 8, 8, and 4. It means 8 high, 4 low, and 8 medium. That is the only arrangement. No other arrangement is there. So it means recorded as medium, that should be exactly A. Question number 2 already answered. That is going to be option 4. That's it. Clear? Now, the next I need to figure things out, some things. Now, in the first 5 pumps, I know. In this one, I know. Okay. Now, I'm going to read question number this. Now, question number 3 says if the contamination level of P11 is recorded as low. So, I don't know the contamination level of P11. Otherwise, this information would not have been given. Contamination level at P was recorded as medium. Okay. So, there are 2 conditions that are given, P11 and P15. I don't know. Okay. Now, okay. So I need to make 8, I need to make 8, and I need to make 8 till this point. Till 15, I need to make 8 high. I already got 3. I need to arrange 5. Okay. So if I give these 2 values as medium, medium, medium. So I got high, then high, then high, then high. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Is it possible? I'm just making hit and trial, making cases. If I 7 and 8 have the same level of contamination, I need 8 high. So if I'm getting 8 high, 3 are here, fourth one, fifth one, sixth one, seventh one. The best case scenario I have found. So if still I'm not reaching 8, it means 7 and 8, which have the same contamination level, they can never be medium, they should be high only. Otherwise, my arrangement will not be satisfied. So it means they should be high as well as they should be high. Okay. Now I know this is high, this is high. So how many mediums now from, okay, 11, I don't know. Now it can be low, it can be high, it can be anything. Now from 16 to 20, I got 2 possible arrangements. Low, medium, low, medium, low. If this is the case, it means I needed 4 lows, I got 4 lows. 3 here, 1 here. Or medium, low, medium, low, medium. That is, these are the 2 cases I am getting. Now I am going to working on it. Okay. Now, at this point, if I am going to take the first case, I don't know what is, I am looking for first case. It means there is no low in all those cases. It means they should be medium. They should be high. They should be medium. They should be high. They should be medium. They should be high. They should be medium. That is the case. In the first case, I am getting this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
That is fine. That is good to go. If this case is there, then I got this is my first case. Everything works out. Okay. I got everything. Okay. Now, if second is the case, then I need to have somewhere I need to have a low or medium. Low, you can replace low by medium or do something. Now I am going to say which of the following must be true. Now let's see. Contamination level of P10, P20. Okay, now I think I'm stuck. P20 is what? Low, it can be low, it can be medium. So must be true. P20 I can't say. P12 is what? High. Okay. I haven't made the second case. P13 is low. P13 is low. That is not true. Okay. So I'm just trying to eliminate the option. So second can't be true, third can't be true. Now I can have P10 and P12. P10 is high, P12 is also high. Okay. So these two values that I'm getting, now my job is to figure out that which one has to be true. Okay. Now this statement says that P6 to P10, there is only one thing that is recorded as low, that is P6. It means this can't be low, this can't be low. It means if this is high, this has to be medium, this has to be high. So it means P10 has to be high, and that is a definite arrangement. It means answer for question number 1 has to be option 4. Understood? Yes, no? Clear on this? Okay. Now what I am going to do, I am going to make the case for P11 is low. Okay. Okay. So P11 is low. So P11 is low. It means I'm looking for second case. So this is low. Now, till now, high, 3, 4, 5, 6. I need 2 high. So it can be medium, high, medium, high. That is a possibility. Or it could be high, medium, high, medium. That is also a possible arrangement. Okay. Now, what does it say? P12 was recorded as high. I don't know. If P11 is recorded as low, so P11 is recorded as low, it means I know it's my second case. It means P18 must be medium. That is, I am getting directly. P18 is recorded as low. That is false. P15 is medium. That is definitely false. Because if this is medium, oh, nice. मैं फिर से गलती कर रहा हूँ बार बार वही गलती केस करने में सो लुक दिस इज मीडियम सो दिस कांट बी मीडियम सो दिस ये वाला केस तो चलेगा ही नहीं इट मींस दिस हैज टू बी हाई दिस हैज टू बी मीडियम दिस हैज टू बी हाई दिस हैज टू बी मीडियम so it means I got the arrangement completely so I can figure out that P12 was high जो अपने में मीडियम आ रहा है तो फर्स्ट वन इज फॉल्स P18 इज लो दैट इज फॉल्स P15 is medium, that is false. P14 is medium, that is true, that has to be true. So answer of this question is going to be what? That is going to be P14 is medium, that's option. ठीक अगला बोल रहे हैं कि P15 is medium. So P15 is medium का मतलब अपना पहला वाला केस चल रहा है पहला वाला केस अगर चल रहा है तो उसमें क्या है कि P13 और P17 का सेम है P13 और P17 का सेम है so I am looking for this first case so P13 P17 we got same and I am looking at false so first one is true so gone P11 P16 P11 P16 that is false so it means answer of this question is going to be option 2
P10, P14 is same. P10 and P14 is same. Both are high. P14 is higher than P15. P14 is higher than. Understood? It was a tricky set. Cases are there. Fine. And perhaps I think I am a little tired, so couldn't made couple of mistakes. But are we clear on this? Yes, no. Ah, na. Okay. So tell me one thing. Did you people learn something new today? Did you learn how to approach? That's the important part. Confidence बढ़ा कम हुआ? Okay. मजा आया? Were 6 hours tiring? We are done close to 6 hours. Not exactly 6, little less than. Shubhang, all the questions are from mock. So, okay. Okay. Anyone wants to ask anything? So 6 घंटे बहुत टायरिंग थे या नहीं थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, या बैठ के कट गए किसी तरीके से? ओके, ठीक है. So I'll see you in later. I'll see you later in some other session. Fine. So okay, that's it from my end. Take care. Bye bye.